transcendental platform. दिव्य स्तर पे आ गए हैं। Hare Krishna. You ready to continue our discussion? अब तैयार हैं हमारी चर्चा जारी रखने के लिए। Hare Krishna. Is Garland? You translating? Yes, sir. All right. Everyone's here. Adam's here. अभी आ चुके हैं, आदम आ चुके हैं, ये भी आ गए, Rock and rollers here. रॉक एंड रोल भी आ चुका है। And all right, everyone looks happy. सभी सुखी लग रहे हैं। I hope I don't ruin it. मुझे उम्मीद है मैं इसको तबाह नहीं करूँगा। So a little late, so just a little bit. I found a few things we can read about. थोड़ी देर हुई, तो मैंने कुछ चीजें ढूंढी है जिसके बारे में बात कर सकते Think हैं, about, सोच सकते हैं, pray about. प्रार्थना कर सकते हैं। It's warm in here, huh? थोड़ी गर्मी है यहाँ पे। Krishna. Welcome back, Gopal. स्वागत है आपका वापस भोपाल। This is good discussion for you to come back in here. बहुत अच्छी बात है आप हमारी चर्चा में वापस आए हैं। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So reading in a Srimad Bhagavatam class in Vrindavan, November 6th, 1976. तो वृंदावन में श्रीमद् भागवतम क्लास नवंबर 6, 1976। And Srila Prabhupada is talking on Srimad Bhagavatam verse 5:18. और श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम 5 स्कंद 5वें अध्याय 18वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। And the translation of that verse is one who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death. और श्लोक का अनुवाद है कि अगर कोई अपने निर्भर व्यक्तियों को दिव्य स्तर पर लेकर नहीं आ सकता, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता, should never become a spiritual master. उसे कभी आध्यात्मिक गुरु नहीं बनना चाहिए। So we've been talking about what is qualification of spiritual master. तो हम बातें कर रहे थे आध्यात्मिक गुरु की क्या योग्यताएं होनी Some चाहिए। are saying everyone's already been ordered and instructed to be guru. किसी ने कहा कि सभी को आदेश अधिकार मिल चुका है गुरु बनने के लिए। Some are saying that you must be trained and you must become qualified. और कुछ बता रहे हैं कि हमें असल में योग्य बनना होगा और प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। And bona fide guru will say who's trained properly and who meets the qualification. और प्रमाणी गुरु बताएंगे किसने प्रशिक्षण को पूरा किया है और कौन सारी योग्यताओं को पूरा कर चुके हैं। So this translation is that one who cannot deliver their dependents from the path of repeated birth and death, they should never become spiritual master. तो यहाँ अनुवाद बताया जा रहा है अगर कोई अपने निर्भर व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं दिला सकता तो उसे आध्यात्मिक गुरु नहीं बनना चाहिए। Or a father, या पिता, or a mother, या माँ, or a husband, या पति, or a wife, या पत्नी, or a worshipful demigod. या देवता। So in any of those leadership positions, one should not assume those positions or those roles or responsibilities unless they can deliver their dependents from the repeated path of birth and death. तो किसी को भी ये नेतृत्व या ये जिम्मेदारी वाला स्थान नहीं ग्रहण करना चाहिए अगर वो अपने निर्भर व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं करा So सकते। this is not just spiritual master, तो ये केवल आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं है, but leader, also parents, they're also meant to be like type of guru. बल्कि नेता, माता पिता वो भी एक तरह के गुरु होते हैं। So Srila Prabhupada is speaking in this verse, तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में बता रहे हैं and he's explaining that these guardians or these leaders, और वो बता रहे हैं ये माता पिता या फिर जो नेता हैं they should be very learned, इनको बहुत ज्ञानी होना चाहिए and they should be very responsible. और बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। The government, the father, the guru, सरकार, पिता, गुरु, the teacher, शिक्षक, the husband, wife, पति, पत्नी, because we're all being guided. क्योंकि सभी Everyone is being guided by someone else. और सभी को उनको मार्गदर्शन मिल रहा है किसी अन्य से, Therefore, they should be learned and responsible. इसीलिए उनको ज्ञानी और जिम्मेदार होना चाहिए। Not like cats and dogs, कुत्ते और बिल्ली की तरह नहीं होना चाहिए।
Just like the cats and dogs, they give birth to children, जैसे कुत्ते और बिल्ली बच्चों को जन्म देते हैं and then they have no responsibility. और फिर वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। So I was talking yesterday about Varnasankar, unwanted population, बात पिछली रात वर्ण संकर यानी कि अनवांछित आबादी की बात कर रहे थे and then other people are talking how to get rid of the unwanted population. और दूसरे लोग ये बातें कर रहे हैं कैसे इस आबादी को कम किया जा सकता Because है they're sucking in all the oxygen, whatever's left, क्योंकि सारा ऑक्सीजन ले रहे हैं जो भी बाकी बचा है and eating all the grains and drinking the water, और सारी फसल अनाज खा रहे हैं और पानी ले रहे हैं and they're creating complete disturbance in the और society समाज में पूरी तरह से परेशानी खड़ी कर रहे हैं because they're completely irresponsible. जो पूरी तरह से गैर जिम्मेदार So हैं। they don't understand how to create proper responsible dependence. तो उनको पता नहीं है कैसे जिम्मेदार व्यक्तियों को निर्माण किया जाए And just like cats and dogs are just giving birth, then those humans who are like cats and dogs, they're giving this unwanted population. तो जैसे कुत्ते बिल्ली बच्चों को जन्म देते हैं उसी तरह जो गैर जिम्मेदार लोग हैं बिना अनवांछित आबादी को जन्म देते हैं And they're acting so irresponsibly. और फिर वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार्य करते हैं So just like cats and dogs, they give birth to the children, then they have no responsibility. तो कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चों को जन्म देते हैं और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं The dogs are loitering in the street. जैसे कुत्ते सड़क पे घूमते रहते हैं Nobody's taking care. कोई उनका ध्यान नहीं रखता But the human society, it should not be like that. लेकिन मनुष्य समाज ऐसा नहीं होना चाहिए There must be responsible guardians. अवश्य जिम्मेदार माता पिता होने चाहिए And some of those responsible guardians are being mentioned here in the Srimad और Bhagavatam. उनमें से कुछ जिम्मेदार लोगों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में बताया गया है First of all, Guru. सबसे पहला गुरु Either you take ordinary teacher in the school or the colleges, they're also being called Guru. तो यहाँ तक कि आप सामान्य शिक्षक जो विद्यालयों में और विश्वविद्यालय में होते हैं उनको भी गुरु कहा जाता है And then the sublime Guru is spiritual master. और लेकिन सबसे उत्तम जो गुरु है वो है आध्यात्मिक गुरु Not only the spiritual master, but anyone who has taken the post of Guru to teach others, he must be very learned and must be very responsible. तो केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं जिसने भी कोई जिम्मेदारी वाला स्थान लिया है उसे ज्ञानी होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाना चाहिए Of course, we cannot be so learned and responsible as God. तो अवश्य हम भगवान के जितना ज्ञानी और जिम्मेदार नहीं हो सकते That is not possible. ये संभव नहीं है But little quantity of those qualities must be there. लेकिन कुछ वैसे गुण हमारे अंदर होने चाहिए Otherwise, why become? वरना आप क्यों बनेंगे ऐसे नेतृत्व में So first of all, it is said about the Guru. तो सबसे पहले बताया गया है गुरु Anyone who takes care of his subordinate, he is a Guru. जो भी अपने निर्भर व्यक्तियों का ध्यान रखता है उनको गुरु कहा जाता है They're dependent on him. He's responsible for them. वो उनके ऊपर निर्भर होते हैं और वो उनकी जिम्मेदारी लेते हैं And the first responsibility or the first charge is that you should not become a Guru unless you are completely in the awareness and realization of how to save your dependence from the path of birth and death. तो अगर किसी को ऐसे जिम्मेदारी वाला स्थान ग्रहण नहीं करना चाहिए अगर आप जागरूक नहीं हैं आपको ज्ञान नहीं है कैसे अपने से निर्भर व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाला जा सकता So है you do not have unflinching faith in Krishna, Guru, Sadhu, Shastra, आपको अटूट श्रद्धा नहीं है कृष्णा गुरु साधु शास्त्र में and you're not able to be empowered to encourage them to surrender to Krishna, और आपको ये सशक्तिकरण नहीं मिला है कि आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकें कृष्णा को so they शरणागत करने के लिए can get free from all of the suffering and all of the sinful reactions, ताकि वो सारे दुखों से और सारे पाप कर्म के फलों से मुक्त हो सकें which is why we're in a suffering condition and why we just keep coming back to all of these different types of miseries and path of birth and death. और इसी की वजह से हम दुखों वाली स्थिति में हैं और कष्टों में लगातार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं So if we cannot purify ourselves and develop that kind of faith and realization, how we're going to give that to anybody else? तो अगर हम स्वयं को शुद्ध करके ऐसी श्रद्धा या साक्षात्कार नहीं पा सकते हैं हम किसी और को ये श्रद्धा साक्षात्कार कैसे दें And the theoretical understanding will not be sufficient. और ये मौखिक समझ पर्याप्त नहीं होगी We'll all just intellectually and theoretical say that this must be true. तो हम अपनी बुद्धि से या मौखिक तरीके से कह सकते हैं कि ये सारी बातें सत्य हैं And then we do nothing about it. लेकिन हम करते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं It doesn't lead to practical surrender. हम व्यवहारिक जीवन में शरणागति नहीं करते And Prabhupada says
says it's just useless. प्रभुपाद कहते हैं फिर ये केवल बेकार है. So if it's theoretical, this will not purify us and it will not convince us. अगर ये मौखिक होगा तो ये हमें शुद्ध नहीं बना पाएगा और हमें आश्वस्त नहीं कर पाएगा. Because we will not have sufficient intelligence and faith. क्योंकि हमें पर्याप्त बुद्धि और श्रद्धा नहीं मिलेगी. Otherwise, how we can surrender? वरना कैसे हम शरणागत कर पाएंगे? Without spiritualized intelligence and faith, nobody can really surrender. आध्यात्मिक बुद्धि और श्रद्धा पाए बिना कोई भी असल में शरणागत नहीं कर सकता. So Prabhupada here is saying one should be completely in awareness. प्रभुपाद ये बता रहे हैं किसी को पूर्ण जागरूकता होनी चाहिए. Not aware. केवल जागरूकता नहीं. Actually, असल में, factually, तत्व में, completely पूर्ण तरीके से in awareness. जागरूकता होनी That चाहिए. means in full. इसका मतलब पूर्ण तरीके से साक्षात्कार होना Tattva चाहिए. Vijnana. यानी कि तत्व विज्ञान होना चाहिए. If we are not like that, और अगर हम ऐसे we नहीं need to be delivered. पहले हमें ही मुक्त होने की जरूरत है. Otherwise, how we can say, yes, I'll deliver you? वरना हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि मैं आपको मुक्त करूंगा? That's why Prabhupada says those who are bound by the wrist and the feet, they cannot help those also who are bound. तो इसलिए कहते हैं प्रभुपाद कि जिनकी हाथ पैर बंधे हैं वो दूसरे किसी बंधन व्यक्ति को मुक्त नहीं कर So पाएंगे. rescuer must be unbound. तो जो बचाने वाले हैं उसे स्वयं मुक्त होना होगा. Those who are bound. उन लोगों की मदद करने के लिए It's जो बंधन common में हैं. sense. जैसे एक सामान्य ज्ञान है. A theoretical understanding of it, it means not surrendering to Krishna. There's no freedom from Maya. कि अगर मौखिक ज्ञान है इसका मतलब असल में कृष्ण को शरणागत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब माया से कोई आजादी नहीं मिल We रही. cannot say, yes, that's your Maya, Krishna, and you're the controller of your Maya, and we should surrender to Maya, and then you release us from Maya. That, theoretically, that's not going to work. अगर हम मौखिक तरीके से ये कहेंगे कि हाँ कृष्णा माया आपकी शक्ति है और हमें आपको शरणागत करना चाहिए ताकि हम माया से मुक्त कर सकें. Unless it's real, genuine, actually surrender, असल में अगर हम शरणागत जब तक ना करें and तत्व में Krishna is शरणागत the ना करें witness and judge of that, और कृष्णा उसके गवाह है वो उसके न्याय करता है. only then will he order Maya to release us. केवल तभी वो माया को आदेश देंगे हमें मुक्त करने के लिए. So Prabhupada says either Krishna or his bona fide authorized representative, spiritual master, can release us from Maya. तो केवल कृष्णा या कृष्णा के प्रमाणिक प्रतिनिधि हमें माया से मुक्त कर सकते हैं. So many of the gurus, they say, we're just connecting you to Prabhupada. कई सारे गुरु कहते हैं हम आपको प्रभुपाद से जोड़ेंगे. Prabhupada will release you. प्रभुपाद आपको मुक्त करेंगे. But the parampara is always manifested. So are you parampara or you're not parampara? तो परंपरा सदैव प्रकट रहती है. तो आप परंपरा हैं या परंपरा नहीं है. If you're parampara, then why are you saying that, my only job connects you to Prabhupada? अगर आप परंपरा हैं, He'll release you. आप अगर परंपरा है तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप प्रभुपाद के पास जाके हमको जोड़ेंगे? प्रभुपाद आपको मुक्त करेंगे. So without surrender to Krishna, there is no release from Maya. तो कृष्णा को शरणागत किए बिना माया से कोई आजाद Without surrender to bona fide guru, also there's no release from Maya. और प्रमाणिक गुरु को शरणागत किए बिना भी माया से कोई मुक्ति नहीं मिलेगी. So if we just say, okay, let's theoretically agree we should all surrender to Krishna and that will free us from Maya. That's enough? अगर हम कहें चलिए हम सहमत होते हैं कि अगर हम मौखिक रूप से हम कृष्णा को शरणागत करते हैं तो हम सभी माया से मुक्त हो जाने चाहिए. Let's just agree theoretically that yes, we should surrender to Rishikesh, the master of the mind and senses. तो हम अगर मौखिक रूप से सहमत हो जाएं कि हमें ऋषिकेश को शरणागत करना चाहिए जो मन और इंद्रिय के स्वामी हैं. Rishi, what are you doing? अब क्या कर रहे हैं? Is there any breeze there? कोई हवा चल रही है? It was no electricity, at least it will be some. Why no, that's not on? No, it's switched off. Is there any breeze there? Там как что-то дует оттуда. Если открою, то будет дуть. He said if he will open, then it will be breathe. Alright, open that door. Открой дверь, Open the проверь. door, open everything and see if there is air there. Открой, посмотри. Будет breathe. Prove it. Докажи. साबित करके दिखाइए. Not दरवाजे theoretically, खोलिए. prove it. मौखिक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से साबित Open करके that door over दिखाइए. there. हवा आ रहा है. Ну так, как оно и будет. Не, ну вообще есть. Devaki, is there air? I cannot fully trust him yet. कि क्या वहाँ से हवा आ रही है? मैं उनको पूरा विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ. कोई हवा आ रही है वहाँ से? I personally I don't feel. Only this like ventilator, some breathe, but this. अच्छा. मेरे पास पंखे से हवा आ रही है.
कि दरवाजे से कोई हवा नहीं आ रही। Little bit is there. A little bit, is there? Yes. Is there a little bit there? Mataji? माता जी से पूछ रहे हैं क्या थोड़ी भी हवा आ रही Any है? confirmation? कोई पुष्टिकरण करेगा? No breathe. No breeze? कोई हवा नहीं है? Okay, open that door. ठीक है, उस दरवाजे को भी खोलिए। Let's give him 100% opportunity चलिए इसको to पूरा be correct. मौका देते हैं कि वो सही साबित हो सके। Because if it works, it's also good, right? क्योंकि अगर ये काम कर गया तो बहुत अच्छी बात होगी। Okay, we were willing to try, Rishi. हम प्रयास करने के लिए राजी थे। You were sincere, so we sincerely tried to help you. आप एकनिष्ठ थे, हम एकनिष्ठता से हमने आपकी मदद करने का प्रयास किया। That's a nice experiment. ये अच्छा प्रयोग किया हमने। खिड़कियों को बंद Because कर when Rishi gets something in his head, it's like everything has to stop, you know? क्योंकि ऋषि के दिमाग में कुछ आता है तो सब कुछ रुक जाना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। Isn't it? ऐसा है या नहीं? Everything has to stop. सब कुछ रुक Let जाना him do चाहिए। it. It works. Great. It doesn't work. Then sit down. अगर ये काम अगर उनके दिमाग में कुछ आता है वो करेंगे, सब लोग बस साथ इसलिए कि अगर काम करता है तो ठीक है, नहीं काम करता है चुपचाप बैठ जाएंगे वो। Now Rishi has to like come back and he's like, why the AC have to come on? You अब know? ये सोच रहे हैं एसी वापस क्यों आ गया? Now I got all humbled out. अब मैं विनम्र हो गया फिर से। Anyway, कोई बात नहीं, sorry Rishi. क्षमा कीजिएगा ऋषि। I was trying to help you. मैं आपकी मदद करने का प्रयास कर I रहा हूँ। had everybody engaged in your project. आपके प्रोजेक्ट में सभी को लगा दिया। Hare Krishna. Thank you, Krishna. Give us some air. धन्यवाद कृष्णा हमें कुछ हवा देने के लिए। Is it getting hot? Is this conversation making you a little warm? क्या ये चर्चा आपको थोड़ी गर्मी बना रही है? You getting a little hot in here? क्या यहाँ थोड़ी गर्मी बढ़ रही है इस बातचीत से? Shut the door. इस दरवाजे को बंद कर दी। Is someone sitting there? कि कोई वहाँ बैठा है? Who? Christina. Oh, shut the door. कोई वहाँ बैठा है? तो मेरे दरवाजा बंद कर दो। That's not nice, right? ये अच्छी बात है। Just a little bit crowded. ठीक है, थोड़ा सा Where were we? हम कहाँ जा रहे थे? Yes, we're talking about apparent surrender to Rishikesh, apparent surrender to Krishna. तो हम बात कर रहे थे कैसे हम बाहरी रूप से अगर शरणागत करें कृष्णा को या ऋषिकेश को, So, is that going to purify, control our mind and senses? तो क्या वो हमारे मन इंद्रिय को नियंत्रित करेगा, शुद्ध करेगा? We're agreeing it's the best thing we should do. हम ये सहमत हैं इस बात में कि ये सबसे श्रेष्ठ चीज जो हमें करनी चाहिए। But until we do it and convince Krishna, लेकिन जब तक हम ये ना करें और कृष्णा को it's not आश्वस्त going ना to करें, purify, control our mind and senses. वो हमारे मन इंद्रिय को शुद्ध और नियंत्रित नहीं करेंगे। So theoretical, intellectual, even if it's true, is not sufficient. तो अगर मौखिक रूप से या बुद्धि के स्तर में भी अगर ये सत्य है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करेगा। Or say, Krishna says, you surrender unto me, I'll deliver you from Maya. कृष्ण बताते हैं अगर आप मुझे शरणागत करेंगे तो मैं आपको माया से मुक्त कर I'll दूंगा। destroy all your sinful reactions. मैं आपके सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर दूंगा। So is an intellectual, theoretical, apparent understanding of surrender, is that enough? तो बुद्धि स्तर पे, मानसिक स्तर पे, बाहरी स्तर Or पे जो is हमारे it शरणागति की actual, समझ है, factual? या हमें तत्व Really, really, असल really. कि असल में हमें शरणागत करना होगा। That's the difference Yeah. between theoretical and scientific. मौखिक और तत्व Or विज्ञान, Gyan and Tattva Vigyan. ज्ञान और तत्व विज्ञान। So here one should be very learned and very responsible. तो किसी को बहुत ज्ञानी या जिम्मेदार होना चाहिए, Otherwise, why try to take that responsibility? वरना क्यों आप वो जिम्मेदारी लेने का प्रयास कर रहे हैं? So first of all, Prabhupada was talking about the guru, तो प्रभुपाद सबसे पहले who's गुरु की बात taking बता रहे care हैं। of his dependents or subordinates, गुरु अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों को ध्यान रखते हैं, and you should not become a guru unless you are completely aware how to deliver them. और आपको गुरु नहीं बनना चाहिए अगर आप पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हैं कि कैसे उनको मुक्त किया जा सकता है। Boy, I hope so. काश मैं कर पाऊँ। Doesn't sound like completely aware. ऐसा नहीं लगता है पूर्ण जागरूक हैं वो।
and saying, well, I'll just connect you to the previous acharya. या फिर कहना कि मैं आपको पूर्वाचार्य के साथ जोड़ दूंगा। The fact that you even think that and is saying that means you're not connected to the previous acharya. और ये सत्य बात है, अगर आप खुद अगर आप उनको पूर्वाचार्य जोड़े हैं, इसका मतलब आप खुद उससे जुड़े नहीं हैं। Because the previous acharya is not preaching like that. क्योंकि पूर्वाचार्य इस तरह से प्रचार नहीं करते हैं। So therefore, one parampara, bona fide guru, is always manifested. इसलिए परंपरा प्रमाणिक गुरु सदैव प्रकट होते रहते हैं। That's why Prabhupada says it's not about finding a guru. इसलिए श्री प्रभुपाद बताते हैं कोई भी गुरु खोजने की One जरूरत should नहीं है। find the guru. किसी को एक प्रमाणिक गुरु को खोजने की And that जरूरत means external manifestation of Krishna and parampara. है। इसका मतलब कृष्ण के बाह्य प्रकट रूप परंपरा है। So you're either parampara or you're not. तो या तो आप परंपरा हैं या परंपरा नहीं है। And if you can't do that service and you say, I'm just connecting you to someone else who can, then why I need you? तो अगर आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं तो आप कह रहे हैं आप किसी और से जोड़ेंगे परंपरा में, इसका मतलब आप असल में परंपरा नहीं है। You're speculating, I'm speculating, I'll just be my own speculator. I don't need your speculation. आप मनोधर्म कर रहे हैं, मैं मनोधर्म कर रहा हूँ, मुझे आपके मनोधर्म की जरूरत नहीं है, मैं खुद मनोधर्म कर लूंगा। So we need a practical solution. तो हमें एक व्यवहारिक समाधान चाहिए। Otherwise, it's apparent and it's just theoretical. वरना ये केवल बाहरी होगा और ज्ञान के स्तर So पर। what kind of guru is that? तो ये किस तरह का गुरु है? So this is going to continue. तो ये हम जारी रखेंगे आगे। Prabhupada's going to explain everything to us. प्रभुपाद हमें सब कुछ बताएंगे। Don't take my word for it. मेरे शब्दों को मत स्वीकार कीजिए। Who am I? मैं कौन हूँ? You just met me. आप बस मुझसे So मिले these हैं। are the authorities. लेकिन Guru ये सभी Sadhu Shastra. अधिकारी This is हैं। what are they saying? गुरु साधु शास्त्र और वो ये So बातें we बता have रहे to हैं। try to understand that. तो हमें उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। Not that I'm your guru, I can cure some kind of colic pain in your belly. तो मैं ऐसा I'm your guru, I can take some pain from your belly. ऐसा नहीं कि मैं गुरु हूँ और मैं आपके पेट में कोई दर्द हो तो मैं उसको ठीक करूँगा। They go to the guru also for this purpose. कुछ लोग गुरु के पास इस उद्देश्य के साथ भी जाते हैं। People generally they go to guru. Rascals, they go to this type of guru. तो ज्यादातर बदमाश लोग इस तरह के गुरु के पास जाते हैं। So rascals go to other rascals. तो बदमाश एक बदमाश दूसरे बदमाश के पास जाता है। Sir, I have some pain. सर मेरा कुछ दर्द है। Give me some medicine. मुझे कुछ दवा So दीजिए। my pain can be cured. ताकि मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। So what is the real purpose to come to the guru? तो गुरु के पास जाने का असल उद्देश्य क्या होना चाहिए? Most people go because they're looking for some relief or they're looking for some blessing, for material benefit. ज्यादातर लोग भौतिक चीजों से राहत पाने के लिए या भौतिक लाभ पाने के लिए गुरु के पास जाते हैं। So they are actually rascals. असल में ये लोग बदमाश हैं। And because they're coming for some material benefit, they are rascals, therefore Krishna gives them rascal guru. तो क्योंकि वो कुछ भौतिक लाभ पाने के उद्देश्य से आते हैं तो इसलिए वो बदमाश हैं और कृष्ण उनको एक बदमाश गुरु देते हैं। Prabhupada said, प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं। don't blame me. मुझ पे कोई दोष मत डालिए। So they want to be cheated. कि वो ठगे जाना चाहते हैं। They do not know what is the purpose of going to the guru. उनको पता नहीं है गुरु के पास जाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। What is the real problems of my life? मेरे जीवन की असल समस्याएं क्या हैं? And why shall I go to the guru? और क्यों मुझे गुरु के पास जाना चाहिए? They do not know. उनको ये बात पता नहीं है। And the so-called gurus also take advantage of the ignorance of the public. और ये जो नाम मात्र गुरु लोगों के अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। So they don't teach you what is Guru Tattva, तो पहले वो गुरु तत्व आपको सिखाते नहीं हैं so that you can be informed ताकि आपको जानकारी मिल जाए and understand the science. और आप विज्ञान को समझ जाएंगे। And by not understanding, we're ignorant about the topic. और जब विज्ञान को जानते नहीं हैं तो हम उससे विषय के प्रति अज्ञानी रहते हैं And then they take advantage of that ignorance. और वो हमारे अज्ञान का फायदा उठाते हैं And they become guru. और फिर वो गुरु बनते हैं। And this is all going on, और Prabhupada. प्रभु बता रहे हैं और ये चलता रहता है। The guru does not know what is his responsibility. गुरु को पता नहीं है उसकी जिम्मेदारी क्या है। And the rascal public, they do not know for what reasons one should go to the guru. और ये बदमाश जनता उनको ये भी नहीं पता है कि किस उद्देश्य से उनके गुरु के पास जाना चाहिए। So this type of guru doesn't know it's to deliver them from birth and death, and the general public, they're not going for that purpose either.
और ये इस नाम मात्र एक गुरु को पता नहीं होता, इनकी जिम्मेदारी है कि उनको जन्म मृत्यु के चक्र से अपने ऊपर निर्भर व्यक्ति को मुक्त करना, और सामान्य जनता जो बदमाश है वो भी सही उद्देश्य से गुरु के पास नहीं Therefore, जाती है। it's the cheaters and the cheated. इसलिए ठग और ठगों की Now, जमाव। who requires a guru, Prabhupada said? प्रभुपाद बताते हैं किसको गुरु की जरूरत है। Everything is there in the Shastra. शास्त्र में सारी बातें बताई हैं। Tasmat gurum prapadyeta jigyasu shreya uttamam from Srimad Bhagavatam 11th canto. श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद में बताया गया है। Therefore, any person who seriously desires real happiness, इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर गंभीरता से असल सुख पाना चाहता है, not material happiness, भौतिक सुख नहीं, must seek a bona fide spiritual उसे master अवश्य प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को खोज करना होगा, and must take shelter of him by initiation. और अवश्य उनका आश्रय लेना होगा उनसे दीक्षा प्राप्त करके। The qualification of the bona fide guru और प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं is that he has realized the conclusions of the scriptures. कि उन्होंने सारे शास्त्रों के निष्कर्ष को समझ लिया है। The qualification of bona fide guru is he has practical realization of the conclusion and purpose of the scriptures. प्रामाणिक गुरु की योग्यता होती है उसने सारा साक्षात्कार प्राप्त किया है सारे शास्त्रों के निष्कर्ष को, And with that faith and conviction is able to convince others of those same conclusions. और उस श्रद्धा और आत्मविश्वास से वो अन्य लोगों को भी श्रद्धा दे पाते हैं। This is one who has implicit faith in Guru and Krishna, then all the imports, all the meaning of all of the shastras automatically revealed to them. कहते हैं अगर किसी को गुरु में और कृष्ण में अटूट श्रद्धा होती है तो सारे शास्त्रों के निष्कर्ष उनके सामने प्रकाशित हो जाते हैं। And then such personality is able to convince us with their faith and realization. और ऐसे व्यक्ति हमें आश्वस्त कर पाते हैं अपने श्रद्धा और अपने साक्षात्कार से, According to Guru Sadhu Shastra. गुरु साधु शास्त्र के आधार पे। Such great personalities who have taken shelter of the Supreme Lord in this way, इस तरह से महान व्यक्ति जो परम भगवान का आश्रय लेते हैं इस तरीके से, leaving aside all material considerations. और सारे भौतिक विचारों का त्याग करके, That means no karma, no jnana, no yoga, no mental speculation, no manufacturing, no concoction, nothing, no material consideration. इसका मतलब ना तो कर्म, ना ज्ञान, ना योग, ना मनोधर्म, ना मनगढ़ंत चीजें बनाना, सारे भौतिक विचारों का त्याग करना। They should be considered and understood to be bona fide spiritual masters. उनको ही केवल समझा और माना जा सकता है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु। From the Upanishad, Tadvigyanatam Sagurum Eva Vigachat Samvit Pani Shodram Brahma Nishtam. उपनिषद में बताया गया है To understand these things properly, चीजों को सही तरीके से समझने के लिए one must humbly approach with firewood in the hand, किसी को विनम्रता से हाथ में यज्ञ की लकड़ी लेकर जानी होती है। a spiritual master, Shodram, who has heard perfect knowledge from the Vedas आध्यात्मिक गुरु श्रोत्रियम जिसने पूर्ण ज्ञान पूर्ण श्रोत से श्रवण किया and है is fixed in that absolute truth as a result of that hearing process. और वो स्वयं उस परम सत्य पे स्थिर है इस श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से। This is qualification of bona fide spiritual master. ये है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की योग्यताएं। Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te jnanam jnanastapatashina. Just try to learn the truth, the absolute truth, by approaching bona fide spiritual master. केवल सत्य जानने का प्रयास करो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर। Surrender there. शरणागत करो उनको Render service unto him. और उनकी सेवा करो। Then you have right to submissively inquire. और तब आपका अधिकार है आप विनम्रता से कुछ जिज्ञासा कर And सकते such a self-realized soul हैं। और ऐसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति can impart this tattva vijnanam, this knowledge unto you, और ये वैसे व्यक्ति ये तत्व विज्ञान आपके अंदर डाल सकते हैं because he has seen the truth. क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। Prabhupada said this is the qualification of guru, प्रभुपाद बताते हैं ये है गुरु की योग्यताएं, tattvadarshi. तत्वदर्शी। So anybody can say they're guru. तो कोई भी ये कह सकता है वो गुरु है, Anybody can say that they're ordered and instructed to be guru. कोई भी ये कह सकता है कि उनको आदेश मिला है अधिकार मिला है गुरु बनने का। But these are the actual qualifications that Prabhupada's talking about at the end of the training. तो
प्रभु बता रहे हैं ये सारी योग्यताएं प्रशिक्षण के अंत में किसी के पास सारी होनी चाहिए, whereby one is qualified to actually be a bona fide spiritual master. जहाँ पे किसी को ये योग्यता मिल सकती है कि वो एक असल में आध्यात्मिक गुरु बन And सके। the previous acharya understands you've met that qualification, और पूर्वाचार्य ये समझ पाते हैं कि किसने योग्यता पूरी then की he है, will order you and instruct you to do the same. और तब वो आदेश देंगे, आपको अधिकार देंगे वही कार्य आगे करने के लिए। Vedanti tattvavidas tattvam yaj jnanam advayam brahmeti brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdite, from Srimad Bhagavatam, 1st canto, chapter 2. श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 2। Those learned transcendentalists who actually know the absolute truth, तो दिव्य आध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं, they call this non-dual substance Brahman, तो वो इस अद्वय को ब्रह्मांड कहते हैं, Paramatma, परमात्मा or Bhagavan. या भगवान। Srila Prabhupada says here, और श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, one who actually knows what is Paramatma, जो असल में जानता है परमात्मा क्या है, what is Brahman, ब्रह्मांड क्या है, what and who is Bhagavan, कौन और क्या है भगवान, he is Tattvadarshi. वो है तत्वदर्शी। These are the qualifications of a guru. ये है योग्यताएं गुरु की। Now, without Krishna's intelligence and faith, and without being able to present according to Guru Sadhana and Shastra with empowerment or potency, how will we realize who has actual knowledge and knows the Paramatma, Brahman and Bhagavan? तो How will we understand that? बिना बुद्धि और श्रद्धा के और कृष्ण की कृपा के कैसे हम समझ पाएंगे किसने ब्रह्मांड परमात्मा या भगवान का साक्षात्कार किया है। So Prabhupada said, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, why should you go to a guru just to try to see some magic? आपको गुरु के पास क्यों जाना चाहिए, केवल कोई जादू देखने के लिए? Yeah, when I first went to Russia, you know, everyone was into like a magic, you know, these, what do they call these people? These mystics. Mystics, like natural healers. Yeah, natural healers, mystics. So it's like very big in Russia, like especially out in the, like in the countryside. तो रूस में विशेष करके देश के कुछ भागों में ऐसे जादू करने वाले लोग मिलते हैं। I met a bunch of these people. The devotees were like, this person has this and that. It's okay, let's go see what he has. और मैं ऐसे कुछ लोगों से मिला, कुछ बात कहते थे, वो व्यक्ति के पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं। I went to one guy, he's telling me, he's like pulling sand out of my back. He's telling all of these things, you know. और एक कह रहा था कि वो जो है रेत निकाल सकता है नीचे से। Right? And then I'm asking, what is he saying? Because it's in Russian, right? And they're saying, oh, he's just telling us how he's pulling all of this sand out of your back, you know. तो मैं और वो रूसी भाषा में बात कर रहे थे, मैंने उनको पूछा ये क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो रेत निकाल सकते हैं पीछे से। And then I saw the devotees, they were like, they really believed this. और मैंने देखा कि भक्तों को उसमें विश्वास भी है, वो बहुत भावुक हैं भक्त। And they have some kind of faith in these like mystics and healers and all of this thing. Right? और उनको किसी तरह का श्रद्धा है इन तरह के योगियों में और इस तरह के उपचार में। So I was just playing along. I'm like, okay, yeah, if you took something out, that's good, you know. तो मैं भी थोड़ा खेल कर So चलो I want to take it out. ठीक है, अगर आप निकाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है। Then I go in the bathroom to wash my hands. और फिर मैं बाथरूम गया हाथ धोने के लिए, And they had like a big bathtub is there. और वहाँ पे बड़ा सा बाथटब था। And I look in the bathtub and there's this huge fish like swimming around in the bathtub, you know. मैंने देखा कि उस बाथटब में एक बहुत बड़ी सी मछली थी और उसमें वो तैर रही थी। Very ordinary. बहुत सामान्य। Everyone has fishes swimming, big fish swimming in your bathtub, right? सभी के बाथटब में बड़ी सी मछली होती है जो तैर रही होती है, Like a lot. जिंदा थी वो। So anyway, it's all going on. तो ये सब चल रहा है। So sometimes when I first went there, I would inquire from the devotees like, how is your life and what's happening, and you know, do you have any questions or do you have any problem? And then they were asking, why is he asking us these questions? Isn't he supposed to know all of these things if he's a real mystic? तो वो जब मैं रूस में आता था प्रचार करने के लिए, मैं भक्तों से पूछता था आपका कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, कुछ समस्याएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो सोचते थे ये हमसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं, अगर ये कोई जादू कर सकते हैं तो ये इनको सारी चीजें पता होनी चाहिए।
So they were like, they misunderstood. तो वो कुछ गलत समझ बैठ रहे Because they think real mystic will automatically understand everything and say everything. Why would they ask a question? क्योंकि असल जो योगी हैं वो सारे कुछ बातें अपने आप समझ जाएंगे, उनको कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Now, of course, in some sense, if you have association in pure, by medium of Krishna, Krishna does know our question and he will manifest and speak to the Guru. But if you're just meeting somebody who has no faith in you, you have no relation with them. तो अगर कोई कृष्णा के सीधे सीधे संपर्क में है, कृष्णा का कोई शुद्ध माध्यम है, तो अवश्य वो सारी चीजें जान सकते हैं. लेकिन अगर कोई बस पहली बार आपसे मिले हों, पहले कभी आप उनसे मिले ना हों, Should we just sit there and say, okay, you just shut up and listen, I'm going to give you the absolute truth? तो क्या हम उनको कह सकते हैं कि आप चुपचाप बैठिए और सुनिए, मैं आपको परम सत्य बताऊंगा. So there must be some kind of, how are you, how's everything, what's going on, like this type of social interaction, is it? तो पहले हमें ये जानकारी लेनी चाहिए आप कौन हैं और इस तरह की कुछ उनसे बातचीत करनी चाहिए. आप कैसे हैं, आपके कोई प्रश्न हैं? Because when I first went to Estonia in Tallinn, I asked one person, how are you today? क्योंकि मैं जब एस्टोनिया टैलेंट में गया, वहाँ मैंने एक व्यक्ति से पूछा आप कैसे हैं आज, And he became very offended with me. और उनको बहुत बुरा लग गया मेरी बात का. And I was asking, why is this person offended with me? I was just saying, hey, what's up? How you doing? What's going on in your life? और मैंने सोचा कि ये व्यक्ति मुझसे मेरी बात को इतना बुरा क्यों मान रहा है. मैं तो उनको बस पूछ रहा हूँ आप कैसे हैं और आपका जीवन कैसा चल रहा है. And they were saying that, well, that's a very personal question. वो कह रहे हैं ये बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हैं. So you have no right when you just meet somebody to ask them like what's going on in your life. तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी नए व्यक्ति से मिले और उनको पूछना शुरू कर दें कि आपके जीवन में क्या चल रहा है. So I was saying, well, like in America, you just say, hey, what's up? How you doing today? What's going on? It's just kind of like saying hello. तो अमेरिका में It's not like I need you to sit down and explain your whole life story to me right now as I'm walking in the park. You know what I mean? तो ऐसा नहीं. अमेरिका में होते हैं तो हम कहते हैं आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, तो हम ऐसे ही बातें कर देते हैं. ये उनका हेलो बोलने का तरीका होता है. लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूछ रहे हैं आप कैसे हैं तो आप बैठ के पूरी कहानी अपनी सुनाने शुरू कर देंगे, पूरे जीवन की So कहानी. anyway, part of it is cultural. तो ये किसी तरह का एक संस्कृति का भाग है. Raised and what we've seen and experienced in our life. तो जिस तरह परिवेश में हम पले बढ़े, जो हमने जीवन में अनुभव किया, ये उसका कुछ भाग है. Then might be also language issue. और हो सकता है भाषा का भी कोई समस्या हो. Some little misunderstanding of what is the meaning of these words. थोड़ी गलतफहमी हो सकती है कि इन शब्दों का असल क्या अर्थ होता है. So how you say those words in one place may not be exactly the same in another place. तो किसी एक क्षेत्र में आप जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरे क्षेत्र में हो सकता है उन शब्दों का अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाए. So when they would immediately start doubting, why am I asking any question to you? तो तुरंत मेरे पर संदेह करना शुरू कर देते थे कि क्यों मैं उनको ऐसे सवाल पूछ Why रहा he हूँ, just not saying? क्यों वो बस ये नहीं कह रहे हैं. And I said, how do you know Krishna is not asking me to ask you a question? और क्यों कृष्णा मुझे ये नहीं पूछ रहे हैं कि मैं आपको सवाल पूछूं. And they're like, yeah, that's true. और उसी तरह फिर वो कहने लगे हाँ ये तो सत्य हो सकता So है. if Krishna is asking me to ask you a question, maybe Krishna wants you to answer it in a way, and then Krishna is going to show to me how you're asking or how you're answering this question. तो हो सकता है कृष्णा मुझे प्रेरित कर रहे हो कि मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं और फिर आप उस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरीके से दें ताकि कृष्णा मुझसे कुछ ऐसी बातें बुलवाएं आपका उत्तर मिल सके. So Prabhupada here, he's saying that most of the people in the public, Sanatans here? Yeah, Sanatans here, okay. Most of the people in the public, I keep looking here and you're over there. मैं बार-बार यहाँ देखता हूँ और मुझे वहाँ मिलते हैं. And it's this midget is sitting here. और यहाँ ये बैठे दिखते This हैं. little version of you. आपका छोटा वर्जन ऐसा लगता है यहाँ बैठा है. That's why I'm getting a little confused. इसलिए मैं थोड़ा कभी भ्रमित हो जाता हूँ. Like a mini me. जैसे जो इसका छोटा वर्जन यहाँ बैठा है. So the public, तो सामान्य लोग they don't know what is the meaning of the guru. उनको गुरु शब्द का मतलब नहीं पता होता. Right? So we're saying, okay, guru is like a mystic. तो हमें लगता है वो गुरु का मतलब कोई जो जादू कर सकता हो, Magic. कुछ जादू कर सकता हो, Right? Or he tells your future. या आपको भविष्य बता सकता Or हो, he takes away some kind of disease. या किस तरह की बीमारी ठीक कर दे. So most of the people, most of the public, they don't really understand what is the meaning of guru. What is guru tattva really? बहुत सारे लोग असल में ये गुरु शब्द गुरु तत्व का अर्थ नहीं जानते हैं. And then the cheaters, they now then get the opportunity of becoming false gurus. और फिर ठगों को मौका मिलता है कि कैसे वो नकली गुरु बन सकते हैं. Right?
So if they don't teach you what is Guru Tattva, now they can be a false Guru because you don't know what is real Guru. क्योंकि अगर वो आपको गुरु तत्व नहीं सिखा रहे हैं तो अब वो नकली गुरु ठग गुरु बन सकते हैं Because you're in ignorance of क्योंकि आप अज्ञान में हैं। So one who's bona fide Guru, he will teach you what is Guru Tattva. तो जो प्रमाणिक गुरु है वो आपको सिखाएंगे गुरु तत्व क्या है। Because without you understanding Guru Tattva, you will not understand who and what is bona fide Guru. क्योंकि अगर आप गुरु तत्व नहीं समझेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कौन और क्या होता है प्रमाणिक गुरु। But those who are cheaters, they'll never teach you Guru Tattva. लेकिन जो ठग है वो कभी भी आपको गुरु तत्व नहीं सिखाएंगे। Number one, because they don't understand it. पहली बात क्योंकि वो खुद नहीं And समझते। number two, they want you to be in ignorance. दूसरी बात वो आपको अज्ञान में रखना चाहते I हैं। remember one time I was in Istagosti in a big temple, and we were having a big discussion. और मुझे याद है हम एक बार इष्ट गोष्ठी कर रहे थे एक बड़े मंदिर में। And then I was bringing so many questions and like trying to have an honest discussion amongst the devotees. और मैं कुछ ईमानदारी से कुछ प्रश्न करके भक्तों के बीच एक चर्चा लाने का प्रयास कर रहा था। And then the temple president, he grabbed me after the Istagosti. और टेम्पल प्रेसिडेंट जो है मुझे इष्ट गोष्ठी के बाद उन्होंने मुझे पकड़ा। And he said, it's obvious, Murali, that you know some things. तो उन्होंने कहा मुरली बहुत स्वाभाविक बात है कि आपको बहुत सारी कुछ चीजें पता है। Most of these people don't know. तो ज्यादातर यहाँ लोगों को पता नहीं। And he says, and we want to keep it that way. और उन्होंने कहा और हम चाहते हैं उनको पता So ना that चले। means he's consciously trying to keep them in ignorance. यानी कि वो जानबूझकर उनको अज्ञान में रखने का प्रयास कर रहे हैं। And then he threatened me और उन्हें फिर मुझे धमकी that दी if you continue speaking the truth like this, अगर इस तरह आप सत्य बोलना जारी रखेंगे we're going to have to send you out to the farm. तो हम आपको हमारे खेतों में काम करने भेज देंगे। And farms are nice. और मैंने कहा खेत में काम It's करना just बहुत they अच्छा don't है। have a farm. बस उनके पास कोई खेत था ही नहीं काम करने के लिए। We're going to have to send you out to the farm that we don't have. मैंने कहा हम आपको खेतों में काम करने के लिए भेजेंगे लेकिन उनके पास कोई It's खेत ही like नहीं है। Godfather 2 or 3, you know. जैसे गॉडफादर फिल्म जो है उसके दूसरा या तीसरा भाग है। So that means that they're knowingly keeping you in ignorance. इसका मतलब वो जानबूझकर आपको अज्ञान में रखते हैं। Just like in the politicians and the educational system, they're purposely, knowingly keeping you in ignorance. जैसे राजनीतिक लोग और इतना सारा शिक्षण व्यवस्था ये जानबूझकर आपको अज्ञान में रखते हैं। Because an educated population is their greatest threat. क्योंकि शिक्षित जनसंख्या सबसे बड़ा खतरा है। Because they cannot cheat you. क्योंकि फिर वो आपको ठग नहीं पाएंगे। So because the people are in ignorance about this tattva, Guru Tattva, तो लोगों को अज्ञानता है गुरु तत्व के विषय में। then those who are cheaters, तो जो ठग हैं they get the opportunity of becoming false gurus. उनको मौका मिल जाता है कैसे नकली गुरु बन सकते हैं वो। In the Western countries, we are seeing so many of these so-called rascal gurus going here and there और पश्चिमी देशों में हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे बदमाश गुरु इधर-उधर घूम रहे हैं and cheating the public. और लोगों को ठग रहे हैं। Uh-oh, you're running away? आप भाग रहे हैं। Is this getting controversial? क्या विवादों वाली बात कर रहा हूँ मैं? Just tired. आप थक गए हैं। We stayed up talking till like 2 in the morning. हम रात 2 बजे तक कल बातें कर So रहे they're हैं a little tired. तो थोड़े थक गए। So, yeah, so in Western countries, we're seeing so many of these so-called rascal gurus going here and there, and they're just cheating the public. तो हम देख रहे हैं पश्चिमी देशों में बहुत सारे ये गुरु इधर-उधर घूम रहे हैं लोगों को ठग रहे हैं। Because the Europeans and Americans, they have some conviction that India has got some type of spiritual knowledge. क्योंकि यूरोप और अमेरिका के लोगों को किसी तरह ये विश्वास मिला है कि भारत में कुछ तरह का आध्यात्मिक ज्ञान है। So anyone who goes from India as a sannyasi or as a Swami or Babaji, they're expected that they must know something. तो कोई भी भारत से कोई स्वामी, कोई सन्यासी, कोई बाबा जी आते हैं तो उनको लगता है अवश्य इनको कुछ ज्ञान है। And these cheater gurus, they're very expert at getting something from them, from the ignorant people. और ये ठग गुरु बहुत निपुण है कैसे अज्ञान लोगों से चीजें ले सकते हैं। Prabhupada said when he came to America, I didn't come here to take anything from you प्रभुपाद ने people. कहा जब मैं अमेरिका आया उनको कहा कि मैं आप लोगों से कुछ लेने I नहीं came आया, here to give you something. मैं यहाँ आप लोगों को कुछ देने आया हूँ। Right? But all of these other bogus people, they're coming to take something. लेकिन ये सारे जो ठग लोग ये कुछ न कुछ लेने आए हैं। And then those who are ignorant, they gather around these so-called rascal gurus. तो जो अज्ञानी है वो ऐसे बदमाश गुरुओं के आसपास जमा होते हैं But these rascals then cheat them. और फिर ये बदमाश उनको ठगते हैं।
This is all going on. और ये सब चल रहा है. But the Shastra, Guru Sadhu Shastra says you should not preach like this to those people. लेकिन गुरु साधु शास्त्र बताते हैं ऐसे लोगों को हमें इस तरह से प्रचार नहीं करना चाहिए. Therefore, you are a rascal guru. इसीलिए आप एक बदमाश गुरु हैं. So we should understand there is, just like money, there's real money and there's counterfeit money. तो जैसे पैसे होते हैं, पैसे कुछ असली होते हैं, नकली, You और should know the difference. तो आपको दोनों के बीच का अंतर पता So होना this चाहिए. real guru, असल गुरु है और प्रमाणिक गुरु, rascal, so-called rascal guru. और नाम मात्र के बदमाश गुरु. And you should know. और आपको पता होना चाहिए. I always used to try to give the benefit of the doubt that somebody just doesn't know, so therefore they're not able to teach what is Guru Tattva. और ये हमेशा मैं लोगों को ये बात बताने का प्रयास करता हूँ, अगर कोई किसी को ज्ञान नहीं है तो लोगों को सिखा नहीं सकते. But then why are they not eager and greedy to learn what is Guru Tattva? लेकिन वो लोग भी क्यों गंभीर या उत्सुक नहीं हैं गुरु तत्व सीखने के And लिए? without that understanding, then why assume the role or position of the Guru without that proper scientific understanding? और बिना उस तत्व विज्ञान के कोई क्यों इस तरह का जिम्मेदारी वाला स्थान गुरु का पद स्वीकार करता है? You should not become a guru because you have no power to save them from the clutches of birth and death. आपको गुरु नहीं बनना चाहिए अगर आपके पास कोई शक्ति नहीं है उनको जन्म मृत्यु के चंगुल से बाहर निकालने के लिए. You are a rascal आप एक बदमाश हैं if you are not confident that you can save them from the clutches of birth and death. अगर आपको आत्मविश्वास नहीं है कि आप उनको जन्म मृत्यु के चंगुल से मुक्त कर सकते हैं. Guru Maharaj, are you going to save us from the path of birth and death? Boy, I hope so. गुरु महाराज, क्या आप हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकते हैं? तो कहते हैं काश मैं निकाल पाऊँ. I'm hoping so. मैं आशा करता हूँ शायद मैं निकाल It पाऊँ. doesn't sound exactly confident, does it? सुनने में आत्मविश्वास नहीं दिखाई दे रहा. Boy, I hope so. काश मैं कर पाऊँ. So if that gives you confidence, you want to just completely, fully surrender there, go ahead. तो वो आपको अगर आत्मविश्वास दे रहा है और अगर आप वहाँ पूर्ण शरणागत करना चाहते हैं तो आप चाहिए. So most people, they don't know what is their problem. They don't understand what problem should they try to solve. तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं उनकी समस्या क्या है और क्या समस्याओं को उनको सुलझाने की जरूरत है. Oh, you get a little pain in your belly or your head. The guru can give you some little dust and some little tap on the head, right? They give you some, they'll just cure it. तो आपको अगर पेट में कोई दर्द है, सर में कोई दर्द है और फिर गुरु आपको कुछ जादुई धूल देके या कुछ छड़ी से आपको उस बीमारी से मुक्त करते हैं. Right. In the beginning, some of our devotees in Russia, they were like disciples practically of these mystics, तो कुछ हमारे रूस के भक्त शुरुआत में ऐसे योगियों के शिष्य हुआ करते थे. The way they would talk, such awe and reverence, ऐसे बात करते थे उनके बारे में इतने सम्मान से. Right. So they didn't just they actually had faith in them. असल में इनको पूरी श्रद्धा थी उन लोगों में. Isn't it? ऐसा है? Sridham? No, this is different. They got some shakti, they can do this and that. ये बहुत अलग है, इनके पास शक्ति है, ये ऐसा वैसा कर सकते हैं. So that's not really guru. वो असल में गुरु नहीं है. Prabhupada said you will find many cheaters like this. बात करें ऐसे ऐसे बहुत सारे ठग मिलेंगे आपको. Prabhupada said 40 years ago I know one place near Lucknow. और पता है 40 साल पहले एक जगह लखनऊ के पास. Now Lucknow is coming. अब लखनऊ की बात आ गई. So some guru came there and he was curing all of these diseases by giving little dust. तो वहाँ एक गुरु आए और लोगों को बीमारी ठीक कर रहे थे उनको कुछ धूल देकर. This one was giving dust. This other guy was taking away the dust. एक जो है वो धूल दे रहा है और यहाँ उसमें दूसरा जो योगी वो धूल निकाल रहा है. So Prabhupada said this is all cheating. तो ये प्रभात कह रहे थे ये सब ठगना है. And I'm asking them, what did they say? And they're like, he took this like sand outside of your body, And I'm like, really? कहते थे उसने क्या किया? उसने मेरे शरीर के अंदर से कुछ रेत निकाली बाहर. I said, did you see the sand? उन्होंने कहा कि आपने देखा रेत बाहर निकालते हुए उसके शरीर से? मैंने कहा हाँ वो निकाल के फेंक दिया.
Then I'm like, okay, this is a little strange, you know. मैंने कहा कि थोड़ा विचित्र बात लग रहा है। Then when I saw the fish swimming in the tub, I just said I lost all my faith after और that. जब मैंने उनके घर में वो बाथटब के अंदर मछली को तैरते हुए देखा, मेरी सारी श्रद्धा खत्म हो गई। Maybe he's giving the sand to the fish. I don't know what other things going on there, but it's all cheating, Prabhupada said. मुझे पता नहीं, और रेत जो है जाके अपनी मछली को लेते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं सारे ठग गुरु उपलब्ध हैं। So later on, it was detected, Prabhupada said. तो प्रभुपाद बता रहे बाद में उनके बारे में पता चल गया लोगों को। Thousands and thousands of men came to him, even big leaders and capitalists. तो बहुत सारे हजारों लोग आए उनके पास, यहाँ तक कि बड़े-बड़े उद्योगपति भी, वो भी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए आए। Prabhupada said, because everyone has some disease, प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबके पास कोई ना कोई they want बीमारी to go and get some kind of miracle. सबको किसी न किसी तरह का जादू कर रहे हैं। And he's giving just a little dust and curing the disease. Why not go see such a guru? कि वो थोड़ी सी धूल डाल के बीमारी ठीक कर दे रहे हैं, तो क्यों ऐसे गुरु के पास ना जाया जाए? What do you have to lose? क्या होगा If आपके he पास? can कुछ do होने it, के लिए। fantastic. अगर वो कर देता है काम तो बहुत अच्छा है। So all of these things is going on, Prabhupada said. प्रभुपाद बता रहे हैं ये सब चीजें चल रही हैं। But the Bhagavatam says that both the public must know what for one should go to the guru. लेकिन भागवतम बताता है किसी को ये पता होना चाहिए किस चीज के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। Why should you go to the guru? Why should you seek a guru? क्यों आपको गुरु के पास जाना चाहिए? क्यों आपको गुरु की खोज करनी चाहिए? Not that it's a fashion to keep a guru. ऐसा नहीं कोई फैशन है गुरु रखने का। Just like to keep a dog. जैसे कोई कुत्ता रखता है। It's like a fashion statement. जैसे एक फैशन की बात है ये। Yeah, I have a guru. मेरे पास एक गुरु है। Oh, you have a guru. ओ मेरे पास गुरु है। So this is fashion statement. तो ये एक तरह का फैशन। Right, in India, if you have a guru, right, you're like cultured, you have some spirituality, right? भारत में अगर किसी के पास कोई गुरु होता है तो कहते हैं हाँ ये थोड़ा सांस्कृतिक, थोड़ा सा फिर धार्मिक व्यक्ति है। So it's like a fashion तो statement. किस तरह का ये फैशन है यहाँ पे? Prabhupada says no. प्रभुपाद कहते हैं नहीं। One must know what is the purpose of the guru. किसी को पता होना चाहिए गुरु का उद्देश्य क्या है। And that purpose of the guru is being described in the Srimad Bhagavatam. और इस गुरु का उद्देश्य श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। Now Prabhupada says one must go to the guru प्रभुपाद बताते हैं किसी को अवश्य गुरु के पास जाना चाहिए and you must surrender to bona fide guru और अवश्य प्रमाणिक गुरु को शरणागत करना चाहिए if you want to solve all of the suffering of material life. तो अगर आप अपने भौतिक जीवन के सारे दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, Threefold miseries, तीन तरह के कष्ट birth, से, death, disease, and old age. जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, How do you solve those problems in your life? Then you need a guru. कैसे आप जीवन की इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तब आपको गुरु की जरूरत है। Then like Arjuna, then you'll surrender to guru. तब आप अर्जुन की तरह गुरु को शरणागत करेंगे। So without intelligence and faith from Krishna, how can you know where you can surrender? तो बिना बुद्धि और श्रद्धा पाए, बिना कृष्ण से कैसे आपको पता चलेगा कहाँ आपको शरणागत करना चाहिए? Not that you keep the guru as your order supplier. ऐसा नहीं कि गुरु को अपना आदेश पूरक I बनाना need चाहते this, I need that, I need to be benefited like this and that. मुझे ये चाहिए, मुझे ये सारे फायदे चाहिए, ये लाभ चाहिए मुझे। I need some auspiciousness, I need some money, I need this, that, right? मुझे जीवन में कुछ सुख चीजें चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, ये और वो चीजें चाहिए। So you're just going to the guru and you're just wanting to be benefited. That is not guru. तो आप गुरु के पास अगर कुछ लाभ कमाना चाहते हैं, तो ये गुरु नहीं है। He is your order supplier. यानी कि वो आपके आदेश का पालन कर रहे हैं। No. He is not guru. That's not a guru who will do like that. तो जो ऐसा करते हैं, वो गुरु नहीं है। That he's your order supplier, he's your servant. कि वो आपका आदेश का पालन करेंगे, वो आपके सेवक हैं। The guru means he must order it. गुरु का मतलब है कि वो आपको You आदेश must do this and that. कि आपको ऐसा ऐसा करने की जरूरत है। And then if you agree, then he is guru. और अगर आप सहमत होते हैं, तब वो गुरु है। Not that I shall order my guru और ऐसा नहीं कि आप गुरु को आदेश देंगे and then he will execute my orders and give me the benefits I'm asking for. और गुरु मेरे आदेश को पूरा करके मुझे वो लाभ देंगे जो मैं मांग रहा हूँ उनसे।
That is like a dog, not a guru. तो वो कुत्ते है, गुरु नहीं. Just like you have a dog, if you get the dog and you say, okay, sit down here, जैसे आप कुत्ता है, कुत्ते को बुलाएंगे, चलो यहाँ बैठो, then the dog will just sit there. तो कुत्ता वहाँ बैठ जाएगा. Keeping that kind of so-called guru has no value. इस तरह के नाम मात्र को गुरु रखने का कोई अर्थ नहीं है. But here is the responsibility of the guru is he must save the disciple from the cycle of birth and death. लेकिन यहाँ गुरु की जिम्मेदारी बताई गई, उसे अवश्य अपने शिष्य को जन्म और मृत्यु से बचाना होगा. So we are suffering because of this rajagun and this tamagun. तो हम दुख भोग रहे हैं इस रजोगुण और तमोगुण की And वजह the से, threefold miseries here. और प्रकृति के 3 गुणों का So प्रभाव है. if the spiritual master cannot give us faith and intelligence to surrender to Rishikesh, to surrender to master of mind and senses, अगर आध्यात्मिक गुरु हमें श्रद्धा नहीं दे सकते हैं, कैसे हम ऋषिकेश जो मन इंद्रिय के स्वामी हम कैसे हम शरणागत कर सकें, then how Krishna will destroy all of this tama, all of the sinful reaction? तो कैसे कृष्ण ये सारे तमोगुण और पाप कर्म से How will मुक्त we करें? then be released from the heavy lashes of Maya? कैसे हम माया के निरंतर मार से बच सकते हैं? And how will we get free from these reactions which force us to take birth after birth? और कैसे हम इन पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकते हैं जो हमें मजबूर कर रहा है बार-बार जन्म और मृत्यु के चक्र में जाने से? That's what it means to save the disciple from the cycle of birth and death. तो इसका अर्थ है कैसे आप अपने शिष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से बचा सकते हैं. So just to mitigate some worldly, materialistic distress and trying to get some material happiness, for that you should not go to a guru. किसी तरह के भौतिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए या भौतिक सुख पाने के लिए आपको गुरु के पास नहीं जाना चाहिए. That is not the proper way. ये कोई सही तरीका नहीं है. The proper way is you should know what are the ultimate problems of your life. सही तरीका ये है, आपको ये समझने की जरूरत है आपके जीवन What की is the real अंतिम problems समस्याएं of क्या your हैं, life? असल समस्याएं क्या हैं जीवन की. And Krishna says, Jama, Mrityu, Jara, Vyati, और कृष्ण बताते हैं जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी. birth, death, disease, old age. These are the real problems of life. जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, ये जीवन की असल समस्याएं हैं. Any questions so far? कोई प्रश्न अब तक? So for this reason, we should take guidance of bona fide guru, spiritual master, तो इस कारण से हमें प्रमाणिक गुरु से मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए. and Krishna. We should surrender to Guru and Krishna. और हमें गुरु और कृष्ण को शरणागत करना चाहिए. Guidance of bona fide guru means guidance of Krishna, प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन मतलब कृष्ण का मार्गदर्शन है. because acharyam mam vijaniyan, that the guru is manifestation of Krishna's mercy. गुरु कृष्ण के कृपा के प्रकट रूप हैं. It says in 11th canto, one should know the acharya as myself. 11 स्कंद में बताया गया है, कृष्ण बताते हैं किसी को आचार्य को मुझे रूप मेरे So रूप में जानना Krishna चाहिए. coming in the form of the acharya. तो कृष्ण आचार्य के रूप में आते हैं. So everyone can say they're acharya, they're guru, they're parampara. सभी कह सकते हैं आचार्य, गुरु, परंपरा. But are we taking that Krishna is present there, manifesting and speaking there in the form and through the form of the guru? तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि कृष्ण प्रकट हो रहे हैं और उस आचार्य के माध्यम से बात कर रहे हैं, गुरु के माध्यम से. And without Krishna's intelligence and faith, and without having a bona fide representative, then this will all just be some sentimental theoretical thing. तो बिना बुद्धि और श्रद्धा जो हमें कृष्ण से मिलेगी और बिना इस तरह के असल प्रमाणिक गुरु के जो भी हमारी चर्चा है ये कोई काम की. Krishna himself is saying one should know the acharya as myself. कृष्ण स्वयं कह रहे हैं आप मुझे आचार्य के रूप में जानिए. Now if Krishna doesn't reveal himself, you don't get mercy of Krishna, mercy of acharya, mercy of guru. How will you know that Krishna is manifesting that? तो अगर आपको कृष्ण और उस आचार्य की कृपा नहीं मिले, कैसे आपको पता चलेगा कि कृष्ण उस गुरु के माध्यम How से will you प्रकट हो रहे हैं? practically realize this statement that Krishna says that you should know the acharya as myself, sakshataripena samasta shastra. कैसे आप कृष्ण के इस वाक्य में श्रद्धा रख पाएंगे कि आप मुझे गुरु के रूप में जानिए, आचार्य के रूप में साक्षात And never disrespect him in any way. और कभी भी किसी भी तरीके से One उनका should अपमान not नहीं be करना चाहिए. envious or jealous of him. कभी भी उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी And चाहिए you should not think him to be an ordinary man. और कभी भी उनको कोई सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए, For he is representative of all of the demigods. क्योंकि वो सारे देवताओं के प्रतिनिधि हैं.
Acharyam mam. Acharya, Prabhupada says, is as good as Guru, same, Acharya, Guru. तो बताते हैं प्रभुपाद आचार्य गुरु के बराबर है, They समान are है, as good as Krishna. वो कृष्णा के बराबर है. It says bona fide Guru is a mercy incarnation of Krishna. कहते हैं प्रमाणिक गुरु कृष्ण का कृपा मूर्ति है. And the benefit from Krishna, the mercy of Krishna through the Guru is not received through any other part of the body, Prabhupada said, except the ear. और कृष्णा के जो हमें लाभ मिलेगा प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, वो शरीर के किसी अन्य भाग से नहीं, केवल कानों के माध्यम से प्राप्त So होता है. everything from Madhau Shraddha and purification all the way to Krishna Prema, all of that is gained by hearing. तो अदाउ श्रद्धा से लेके ये सारे शुद्धिकरण की प्रक्रिया तक वो गुजरते हुए कृष्ण प्रेम तक, ये सारा श्रवण के माध्यम से प्राप्त होता This is a है, question of faith. क्योंकि ये श्रद्धा का प्रश्न है. So Krishna in the form of the Guru is giving faith through transcendental sound vibration. तो कृष्णा गुरु के माध्यम से श्रद्धा दे रहे हैं इस दिव्य शब्द ध्वनि के माध्यम से. So if you associate with persons who have unflinching faith, तो आप उन लोगों का संग करेंगे जिनके पास अनूप श्रद्धा and है, you learn how to do submissive oral reception, और आप सीखेंगे कैसे आप विनीत भाव से उनसे श्रवण कर सकते हैं, putting unflinching faith in Guru and Krishna, और गुरु और कृष्ण में अटूट श्रद्धा रख के, then by their mercy and them giving you the right of hearing, they can instill their faith into you through your ear, through submissive oral reception. उनकी कृपा से वो आपको श्रवण का अधिकार देंगे, और उस प्रक्रिया के माध्यम से वो आपके हृदय में श्रद्धा को स्थापित करेंगे. Otherwise, what do you consider mercy? वरना आप कृपा किसे मानते And हैं, how do you think you're going to receive mercy from Krishna to the Guru? और क्या लगता है आपको कैसे कृष्ण की कृपा मिलेगी गुरु के Oh, माध्यम he से? gave me seva, or he gave me a house, he gave me some food, he gave me some money, he blessed me by some material benefit. Is that the mercy of the Guru? कि उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, मुझे कोई घर दे दिया, मुझे कुछ खाना दिया, मुझे कोई भौतिक लाभ दे दिया. प्रभुपाद कहते हैं कि इससे समझ पाएंगे वो प्रमाणिक गुरु है. So two mercies required, mercy of Krishna, mercy of Guru. दो कृपा की जरूरत है, कृष्ण की कृपा और गुरु की कृपा. Prabhupada said if you are actually sincere, प्रभुपाद कहते हैं अगर आप असल में एक निष्ठ हैं, actually sincere, असल में एक निष्ठ हैं, if we actually want Krishna, कि असल में हम कृष्ण को I'm चाहते not हैं, making this up. मैं ये खुद से नहीं बना रहा. If you are sincere actually, अगर आप असल में actually एक निष्ठ हैं, असल में अगर आप कृष्ण को चाहते हैं, I have to show you, you think I'm making this stuff up. आप लोगों को लगता है मैं खुद से ये चीजें बनाता रहता हूँ. That's why you have to quote the law books. इसीलिए मुझे कानून की किताबें से साबित करने पड़ता है. Right? Don't listen, you don't have to take my word for it. आपको मेरे शब्दों को लेने का जरूरत है. I'm also referring to the ultimate authority here, right? मैं भी यहाँ जो सर्वोत्तम अधिकारी है उनको सुझाव दे रहा हूँ. So if you are sincere, actually, तो अगर आप एक निष्ठ हैं, असल if में, we actually want और Krishna, अगर असल में कृष्ण को चाहते हैं, Krishna is within your heart. कृष्ण हमारे हृदय में है. Ishvara Sarvabhutanam Hrideshe Rajuna Tishtati. Krishna says, I am situated in everyone's heart, कृष्ण बताते हैं मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ, O Arjuna, हे अर्जुन, and directing the movements of all the living entities और मैं सभी जीवात्माओं के कार्यों को मार्गदर्शन देता who हूँ, are seated as on a machine made of the material energy. जो इस यंत्र में बैठे हैं जिसका निर्माण इस भौतिक प्रकृति ने किया. When Krishna sees here is a surrendered soul, जब कृष्ण देखते हैं यहाँ एक शरणागत he जीवात्मा है, actually wants me. और ये असल में मुझे चाहता है. Jesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Buddhi yogam dadami tam, Prabhupada said. प्रभुपाद ने ये बात बताई. As soon as he sees, as soon as Krishna sees, जैसे ही कृष्ण देखते हैं here's a sincere person who wants me, यहाँ वो एक निष्ठ व्यक्ति है जो मुझे चाहता है, he'll give you a very nice guru. तो वो आपको एक बहुत ही अच्छे गुरु देंगे. And if you have a bona fide guru, और अगर आपके पास असल में एक प्रमाणिक गुरु है, is it bona fide and then really bona fide? कि असल में प्रमाणिक गुरु और एक प्रमाणिक गुरु, If you have a bona fide guru, अगर आपको असल में एक प्रमाणिक then गुरु by pleasing him, तो उनको सुखी करके you will get the favor and the mercy of Krishna. तो आपको कृष्ण का कृपा आशीर्वाद मिलेगा. Yasha prasad bhagavad prasada yasha prasada nagati kutopya.
If you think that you become more than your guru, अगर आप सोचते हैं आप गुरु से ज्यादा जा that चुके you'll हैं, overcome your guru and still you get Krishna's mercy as prasad. अगर आप गुरु के आगे जाके फिर भी कृष्ण की कृपा कृष्ण Or प्रसाद दे you think सकते that हैं, you have learned or realized more than your guru. या फिर आप सोचते हैं आप सीख चुके हैं या ज्यादा साक्षात्कार किया This आपने is गुरु से भी also ज्यादा, not at all good. तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। And these are injunctions of the previous acharyas, Vishwanath Chakravarti Thakur. और ये पूर्व आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के निर्देश है। Prabhupada said there are so many, you will find rascal gurus. तो वो बताते हैं आपको बहुत सारे बदमाश गुरु मिलेंगे They are preaching like that. और वो इस तरह से प्रचार करते हैं, Whatever you want to do, जो भी आपको करना है it's all right. सब ठीक है, Whatever you want to do, it's okay. It's जो भी okay. आप करना चाहते हैं सब ठीक है। So there's so many rascal gurus are preaching like तो that. बहुत सारे इस तरह से बदमाश गुरु प्रचार कर रहे हैं, Whatever you have manufactured, जो भी आपने बनाया that is also a way of salvation. वो भी मुक्ति पाने मुक्ति का मार्ग है। This is cheating. ये This is सब rascal है, guru. ये है बदमाशी। Unless you surrender to Krishna, जब तक आप कृष्ण को शरणागत नहीं करेंगे, unless you surrender to Krishna, Hari, there is no question of salvation. जब तक आप कृष्ण को हरि को शरणागत नहीं करेंगे तो There's मुक्ति का no कोई सवाल नहीं question उठता, of deliverance. मुक्त होने का कोई सवाल नहीं उठता। If one is bewildered and thinks, okay, whatever I do, oh, I'm doing it sincerely for Krishna, right? Obviously, definitely Krishna will accept it. अगर कोई इस तरह से भ्रमित है कि हाँ मैं जो कुछ कर रहा हूँ एक निष्ठता से कृष्णा के लिए कर रहा हूँ और कृष्णा अवश्य उसको स्वीकार कर रहे हैं, That is a big तो mistake. ये बहुत बड़ी गलती है। So we must do it. Prabhupada said this is exacting science. तो आप बताते हैं ये एक सटीक विज्ञान है। So Prabhupada here is talking Prabhupada यहाँ बता about रहे these हैं। different types of false gurus. अलग अलग तरह के नकली गुरु होते हैं, And then he's talking about what is the actual qualification. और फिर वो ये बता रहे हैं कि असल योग्यता क्या होती है, So that the person who doesn't even know why you need a guru ताकि जो व्यक्ति को ये भी ज्ञान नहीं गुरु उनको क्यों चाहिए and what and who is a guru, और क्या और कौन है गुरु, that they may understand that there's more detail that's required so that we do not cheat looking for the guru and neither we receive a cheating or cheater guru. तो ये सारी चीजें हम अगर सीख पाएं तो हम जान पाएंगे कैसे हमें कोई ठग गुरु ना मिले या हम किसी गुरु से ठगे ना जाएं। So these are more of the qualifications of bona fide guru. तो ये कुछ और बातें हैं प्रमाणिक गुरु की योग्यताओं के विषय It's में। very cheap and easy to say yes, everyone received, order instruction to become guru. ये बहुत कहने का बहुत सस्ता आसान तरीका है कि हाँ सभी को आदेश अधिकार मिला है गुरु बनने का। Prabhupada says when the training is complete, प्रभुपाद ने ये कहा है जब प्रशिक्षण पूरा when you होगा, have met this qualification, जब आप इस योग्यताओं को पूरा कर पाएंगे, can you imagine if so many people are trained and have this qualification, what good they can do for the humankind? क्या आप सोच सकते हैं अगर इतने सारे लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा और अगर सभी योग्य बन पाएंगे तो मनुष्य समाज का कितना भला हो सकता है। Was it Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur? He said if I could have just one moon, was it Bhakti Siddhanta or Prabhupada? Prabhupada. I think Prabhupada said like that, right? One moon is enough. Yeah. So many stars are there, right? But if I could get one moon, then I can do everything. प्रभुपाद बताते हैं जैसे आसमान में इतने सारे तारे हैं लेकिन केवल एक चांद ही अगर मैं ले आऊं तो वो पर्याप्त होगा सारी रोशनी देने के। So they're even hoping just for one, तो वो लोग आशा कर रहे हैं कम से कम कोई एक मैं बना पाऊं। right? Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, before he left, he said, none of you are qualified to be acharyas. प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब ये शरीर त्याग कर उन्होंने अपने सारे Now शिष्यों को those बुलाकर members, कहा, they want to argue. No, we're a branch of Mahaprabhu's parampara. कह रहे तुम में से कोई भी आचार्य बनने के लिए योग्य नहीं। अब वो यहाँ आके बहस कर रहे हैं कि हम महाप्रभु के आचार्य की परंपरा में शाखा Why? हैं। Because we say so. क्यों? क्योंकि ऐसा हम कह रहे हैं। Well, the person who's in charge of the parampara, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he said, none of you are qualified to be acharya. लेकिन जो परंपरा के इंचार्ज थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने कहा आप में से कोई भी प्रमाणिक आचार्य नहीं है। And Prabhupada said that's why he didn't name anyone as at that time as और acharya. इसलिए प्रभुपाद ने अपने किसी भी गुरु भाई का नाम आचार्य के रूप में नहीं दिया। Because his idea was that amongst the preachers and the governing body, that
time some person will become empowered, क्योंकि ऐसा विचार था कि ये जो व्यवस्थापक समिति के व्यवस्था जब बनाएंगे तो समय के साथ में कुछ आचार्य वैष्णव आएंगे and they'll be able to do that work. It'll be self-evident. और वो उस कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे और ये स्वयं साबित प्रमाणित कर देगा। And then Srila Prabhupada himself said, out of all of my godbrothers, none of them are qualified to be acharya. और श्रील प्रभुपाद ने स्वयं कहा कि मेरे गुरु भाइयों में से कोई भी योग्य नहीं था आचार्य और गुरु बनने के लिए। So when I tried to say other night, Prabhupada said that he put one name there, and it was his own name there. तो मैंने जब कल कहने का प्रयास किया, प्रभुपाद ने केवल एक नाम दिया परंपरा में, वो अपना नाम। And they gave this impression that other gurus in other branches of Mahaprabhu's parampara, their names are there. और वो बता रहे हैं कि महाप्रभु की परंपरा में जो बाकी गुरु हैं, उन पर इस परंपरा में वो शाखाओं के रूप में उनका नाम अलग जगह पे है। And I said, yeah, but the branch is from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. मैंने We're कहा talking about this branch, हम जो शाखा की बात कर रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, इस not any other branch. और कोई दूसरे शाखा की हम बात नहीं कर रहे हैं। And then the next day after, then I read, Prabhupada said, actually out of all of my godbrothers, none of them are qualified to be acharyas or gurus. और उसके बाद मैंने पढ़ा श्रील प्रभुपाद ने कहा असल में उनके कोई भी गुरु भाई जो योग्य नहीं थे प्रमाणित गुरु बनने के लिए। Now, many of them, right, they're born in Vaishnava family. उनमें से कई का जन्म वैष्णव परिवार में हुआ है। Right? They're brahmanas, brahmacharis, ब्राह्मण थे, ब्रह्मचारी थे, sannyasis, सन्यासी थे, scholars, विद्वान थे, kirtaniers, कीर्तनीय, giving big pravachan, बहुत बड़े very, प्रवचन, very powerful personalities. बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। So what you look at that category, and then you look at the hippies. तो आप उस संघ को देखिए और आप देखें यहाँ हिप्पियों के संघ को। Right? So now all of a sudden the hippies have all become bona fide acharyas in parampara. तो अचानक से भी हिप्पी सारे प्रमाणिक आचार्य बन चुके हैं परंपरा में। Think about it. थोड़ा सोचिए इसके बारे में। And Prabhupada is saying that these other personalities, even they're not qualified to be acharyas or gurus. प्रभुपाद कहते हैं मेरे गुरु भाई जैसे इतने महान व्यक्ति तो ये कोई योग्य नहीं हो पाए प्रमाणित। So what is this qualification that people think they got? What is this order and instruction without the qualification to be guru? तो अगर उनको योग्यता नहीं मिली है गुरु बनने के लिए तो वो क्यों सोच रहे हैं वो गुरु बन सकते हैं? And that's why Prabhupada put his own name there. और इसीलिए प्रभुपाद ने स्वयं का नाम And डाला no one else's name. और किसी अन्य का नाम नहीं डाला। Because he understood that he got that mercy and blessing and instruction and order and empowerment from his guru in parampara. क्योंकि वो समझ पाया उनको कृपा मिली, आशीर्वाद मिली, शक्ति मिली, सशक्तिकरण मिला अपने गुरु से परंपरा में। And he said, and none of the rest of them are qualified. उन्होंने कहा मेरे अलावा और कोई भी अन्य योग नहीं Now you बना। may say, well, that sounds proud. तो आप Or ऐसे कह just सकते हैं self-promotion. कि सुनने में बहुत अहंकारी वचन लग But रहा है, actually, खुद का it's वचन है। scientific. लेकिन असल में ये बहुत वैज्ञानिक बात है Because they understand what is Guru Tattva. क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि गुरु तत्व क्या है। And not only that, but Prabhupada said, don't associate with them. और प्रभुपाद ने यहाँ तक ये भी नहीं कहा, उन्होंने कहा उन लोगों के साथ संग भी मत करिए Because they cannot help you. क्योंकि वो आपकी मदद नहीं Only कर they पाएंगे, can hurt you. वो केवल disturb आपको you. नुकसान कर पाएंगे। So they're not qualified. तो वो योग्य नहीं है। Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said that. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर Srila ने ऐसा कहा। Prabhupada said that none of my godbrothers are qualified to be acharyas, gurus. और श्रील प्रभुपाद ने भी कहा मेरे गुरु भाई में से कोई भी योग्य नहीं था गुरु या And आचार्य। don't associate with them. और प्रभुपाद ने कहा उनके साथ संग मत Because कीजिए, only they can hurt you. क्योंकि वो केवल आपको नुकसान पहुंचा सकते So now that's instruction of previous acharya, Srila Prabhupada and Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in this parampara. तो ये निर्देश है पूर्व आचार्य के और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के और श्रील प्रभुपाद के जो परंपरा So I'm sorry if that truth is not convenient for you. तो मुझे क्षमा कीजिएगा अगर ये सत्य आपके लिए सुविधापूर्वक In your conception, in your promotion, I'm sorry that's not convenient for you. कि आपके दृष्टिकोण से आपको ये सही नहीं लग रहा, मुझे क्षमा But the कीजिए, truth is the truth. लेकिन सत्य सत्य है। And if the giver of the truth, the speaker of the absolute truth doesn't speak it, then how's anybody gonna know? तो परम सत्य के प्रवक्ता अगर ये बात नहीं बता रहे हैं तो कैसे किसी और को ये बात पता चलेगी?
they're establishing the truth. वो सत्य को They स्थापित कर say, रहे oh, I हैं। have to be quiet because then people will think I'm proud, and then I don't want them to misunderstand, so I won't speak the truth. कि मुझे चुप रहना चाहिए क्योंकि मैं स्वयं को नहीं दिखाना चाहता मेरे अंदर कितना अहंकार है और लोगों को सत्य पता चल जाएगा इससे। Then if they don't understand it, they're in ignorance of the truth. तो अगर उनको ये सब बात समझ नहीं आएगी, वो सत्य के The अज्ञान other में, so-called gurus are purposefully not telling them to keep them in ignorance. और अन्य जो नाम मात्र के गुरु हैं वो जानबूझकर उनको नहीं बता रहे हैं उनको अज्ञान में रखने के Somebody लिए। better speak the truth. तो बेहतर होगा किसी को तो सत्य बोलना होगा, Otherwise, what hope does the humanity and the public have? वरना मनुष्य समाज में क्या आशा रह जाएगी। Especially if they're looking to understand what is spiritual life and how to advance in our spiritual life. विशेषकर जब लोग ये ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति की जा सकती है। So, any points or questions? तो कोई प्रश्न या कोई बात, Anything, Shivas? कोई भी श्रीवास? I'll try to be nice tonight. आज की रात में थोड़ा अच्छा रवैया रखने का प्रयास करें। Sometimes I'm not nice enough. कभी-कभी मैं उतना सही नहीं रहता, I'm sorry. मुझे क्षमा कीजिएगा। Sometimes when you're like roaring, establishing the truth, like you like offend people, like not intentionally. तो कभी-कभी आप दहाड़ कर सत्य को स्थापित करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो कई बार लोगों को बीच में बुरा लग जाता है। But people's sensibility becomes little disturbed. लोगों की थोड़ी स्थिति थोड़ी परेशान हो जाती है। And then everyone has a certain conception about the guru, right? They're supposed to be very humble and like sadhu. And they shouldn't be so like angry and pounding, cutting, slashing, chopping, blowing up. These words don't compute for the sadhu, right? लोगों का साधु गुरु के प्रति अलग दृष्टिकोण होता है कि उसको विनम्र साधु की तरह होना चाहिए। ये गुस्सा और ये काटना, छाटना, उड़ा देना, ये सब बातें जो है साधु के साथ मेल नहीं खाती है। In the military, they have this, they make these underground bunkers, like thick steel, right? Steel and cement, right? For years, they just developed this thing. It's practically impenetrable. You're going to penetrate it, right? तो सेना में लोग जो है जो जमीन के अंदर बंकर बनाते हैं और सीमेंट और स्टील की मोटी-मोटी परतें डाल के ऐसा लगता है उनको कुछ भी चीज भेद नहीं सकता। इस तरीके से उनको सालों-सालों से तैयार किया जाता है। So a few years back, in the U.S., they made this bomb called the mother of all bombs, right? Moab, M-O-A-B, the mother of all bombs. कुछ साल पहले अमेरिका ने एक बम बनाया, बहुत बड़ा, उसको मोआब कहते थे, यानी कि सारी बमों की माँ है वो। Of course, compared to Russia, it's a joke, but that's another story. लेकिन रूस की तुलना में तो वो एक छोटा सा मजाक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। Russia's using like some like previous generations fighting some like world war. They're not even using the high-end stuff yet, तो रूस जो है अभी तक अपने जो है सबसे बड़े-बड़े हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। वो तो पुराने जो विकार हो चुके हैं ऐसे उपकरणों को छोड़ रहा है। They're taking on the biggest army in Europe in history. This Ukrainian NATO army. तो वो ये सबसे बड़ी इतिहास की सबसे बड़ी जो सेना है नेटो और यूक्रेनियन आर्मी को वो संभाल रहे हैं अकेले। Right? Even the Nazis didn't have that. यहाँ तक कि नाज़ी भी ये नहीं कर पाए थे। What they have, training-wise, equipment-wise, money, manpower. Right? Even they didn't have that. नाज़ी के पास भी ये सारी चीजें नहीं थी, कैसा प्रशिक्षण, कैसे उपकरण, किस तरह की सेना, ऐसी चीजें उनके पास नहीं थी। And Russia is using S-300 system, right? और रूस जो है S-300 व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहा है। And they're destroying the biggest, most powerful army Europe has ever put on the ground. और वो यूरोप की सबसे शक्तिशाली सेना जो जमीन पे मौजूद है उसको तबाह कर रहे हैं। And they have S-400, S-500, God knows what else they have over there. और उनके पास S-400, S-500 जैसे उपकरण मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो उनको हरा नहीं पा रहे। So the point is that sometimes when this enemy or when we're so dug into this reinforcement, you need a bomb that can just like crash through all of those cement and steel and the mother of all bombs, तो कभी-कभी जो शत्रु जो इस तरह से नीचे छुपा होता है बंकर में, तो ऐसे बमों की जरूरत होती है जो सारे बमों की माँ हो कि सारे चीजों को चीरते हुए फेंकते हुए सब कुछ उड़ा दे। So we are so thick
तो हम ऐसे with मोटे such false एक ego. अंदर है, ऐसा हमारा मिथ्या अहंकार है, Himalayan mountains. हिमालय पर्वत जैसा। Right? We need like a bomb, हमें भी ऐसा बम चाहिए right, to get rid of all of this thing. इन सारी चीजों से मुक्त होने के लिए। And then we're petrified of that concept. और इस विचार से हमें भय आने लगता है। You know, I'm waiting for the mother of all bombs, you know. पता नहीं बमों की माँ What exactly does that mean? इसका मतलब क्या होता है? But what's going to move us? लेकिन क्या हमें आगे बढ़ना What's है? going to shake us out of our complacency? क्या हमारे ढीले ढालेपन से हमें What's going to हिलाएगा? create the urgency? क्या हमारे अंदर वो गंभीरता विकसित करेगा? We need a bomb. हमें बम चाहिए। I'm not so sincere, I'm not so serious, it's not so urgent, I'm not so motivated. उतना गंभीर नहीं हूँ, उतना भी मुझे जरूरत नहीं है, उतनी गंभीर नहीं हूँ, मैं फंसा हुआ अभी। I accepted on some intellectual platform, मैं अपने बुद्धि से समझ चुका हूँ कि but चीजें it's सही है, not बातें enough सही to हैं। really do anything, surrender. लेकिन ये पर्याप्त नहीं है कि मैं असल में शरणागत कर It needs a पाऊँ। bomb. तो आपको बम की जरूरत है। And they're coming real soon. और ये बहुत जल्द आ रहा है। Definitely. Get your bullock carts out, man. अपनी बैलगाड़ी तैयार कर लीजिए। Sorry to disappoint you. क्षमा कीजिएगा आप लोगों को निराश करने के लिए। They don't build, Prabhupada said, you don't build all these bombs and all these weapons not to use them. प्रभुपाद बताते हैं ये सारे बम और हथियारों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उनका कभी इस्तेमाल नहीं होगा। Man's nature and the false ego, right? They're forced to do it. मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, मिथ्या अहंकार ऐसा है कि वो मजबूर होते हैं लड़ने के लिए। And then because there's so much sinful reactions there, और इतना सारा पाप कर्म मौजूद so है, much Vana Shankar, so much unqualified population, इतना unwanted सारे- population, इतने सारे अनवांछित आबादी वर्ण संकर मौजूद है। committing, you know, each person has like Himalayan mountains worth of sinful reactions. What about if you take all of these billions of people and put all of those sinful reactions together? तो एक व्यक्ति के पास हिमालय पर्वत जैसा पाप कर्म भरा पड़ा है, तो अगर क्या होगा जब इतने सारे अरबों लोगों को एक साथ जमा कर दिया, उनके अंदर कितना हिमालय All of पर्वत this जैसा sinful अहंकार। reaction is just like tamagun personified. और ये सारा पाप कर्म का फल तमोगुण का So it's रूप just है। heavy. That's why Maya Jagat is so much tama, so much darkness is there. इसलिए माया जगह इतना तमा, इतना अंधकार है वाला जगह है। So we're supposed to go into the great awakening and the next, what is Mahaprabhu's, what is it called? Golden age. Right, the golden age, the spiritual age of Prem Bhakti. That means you have to get rid of all of this tama, all of this tamagun, is it? लेकिन महाप्रभु के इस स्वर्ण युग में आने के लिए हमें इन सारे तमोगुण इतने पाप कर्म के फलों से मुक्त होना होगा। Just blow it up. Blow it up. उड़ा देना होगा। Blow them up. Like Trump, blow them up. Blow it up. ट्रम्प कहते हैं उड़ा दो। It's nature. That's the way Krishna. Why do all these wars happen? How many people died in Kurukshetra? Right? So many wars. Why are all these people? Hundreds, thousands, millions of people. Why are they dying? If it's Vanasanka, unwanted population, filled with sinful reactions, you have to. Krishna has to eliminate and purify it. तो इतने सारे आबादी के को खत्म करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, वर्ण संकर पाप कर्म से मुक्त करने के लिए कुरुक्षेत्र में सैकड़ों करोड़ों लोग मारे गए। तो कृष्ण ऐसे अनवांछित आबादी को खत्म करने के लिए ये युद्ध करवाते हैं। Now Bharatavash, holy, supposed to be holy Dham. तो ये भारतवर्ष जो है जिसको पवित्र धाम माना जाता है, More कृष्ण यहाँ population आए in India now than even in China. और ये भारत की आबादी अब चीन से भी ज्यादा आगे जा चुकी है। Just imagine how much Vana Sankar is here. कल्पना कीजिए कितना वर्ण संकर हो रहा है यहाँ। And then in India, you're supposed to know what is sinful activity. और भारत के लोगों को जानकारी होनी, ज्ञान होना चाहिए पाप कर्म क्या So होता है। who deserves punishment more? तो कौन दंड का ज्यादा बड़ा भागी? Prabhupada said those who know and they commit, they get more heavy punishment. प्रभु बताते हैं कि जो जानते हैं फिर भी वो अपराध करते हैं उनको ज्यादा बड़ा दंड मिलता है। Prabhupada said, don't blame me. प्रभुपाद ने कहा है मुझ पे दोष मत डालिएगा कोई। So just imagine what's coming. तो आप कल्पना कीजिए कि क्या How do आने you वाला है। avoid that? कैसे आप इससे बच पाएंगे? It's inevitable. इससे बचा नहीं जा It's just सकता, a matter of time. बस समय की देर है। So the previous acharyas, they speak about this thing. तो पूर्वाचार्य इसके विषय में बात करते हैं And they say it must happen. और वो कहते हैं ये अवश्य होगा।
And then you see these people that have no brains. और आप देखिए इन लोगों के पास कोई दिमाग ही नहीं They है, have no cool heads. इनका दिमाग ठंडा ही नहीं रहता, There's no Rajashis. कोई राजर्षि नहीं, There's no saintly kings. कोई राजर्षि रख नहीं है, Everybody's a rascal, more or less. सभी बदमाश हैं, कम या ज्यादा, Everyone's materially motivated. सभी लोगों के कोई भौतिक Everyone's उद्देश्य है, envious and jealous. सभी द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, And we're fighting over limited resources. और कुछ सीमित संपदाओं के ऊपर And झगड़ा हो whatever रहा we है, do have, nobody's satisfied. और जो भी जिनके पास है उससे कोई संतुष्ट नहीं हो पा रहा, They want more and more and more and more. सब और ज्यादा चाहते हैं, And they need less and less and less of the people who are getting in the way of that. और वो चाहते हैं जितने कम से कम लोगों की आबादी की जाए जो उनके इस रास्ते में आ रहे हैं, This is inevitable. तो इससे बचा नहीं जाएगा। So we need a good shock. तो हमें एक तगड़े झटके की जरूरत है, A nice अच्छे लाभ bomb go off. अच्छे बम की जरूरत है, Then we'll get motivated. तब हमें प्रेरणा मिलेगी। Right? In England, they're saying, "Oh, the Nazis, they'll never bomb England. We're allies. Russia is our enemy." तो इंग्लैंड के लोग कहते हैं नाज़ी हमारे ऊपर कभी बम नहीं गिराएंगे और वो हमारे मित्र हैं, रूस हमारा शत्रु है। So what fools? You're trusting Hitler? तो आप कैसे बेवकूफ लोग हैं, आप लोग मूर्ख हैं, आप लोग हिटलर पे भरोसा करें, नाज़ी पे भरोसा Demoniac करें, Nazi leader, you're trusting them? असुर नाज़ी नेताओं पे आप भरोसा कर रहे हैं। You're going to trust the word of a Nazi atheist? तो आप ये नाज़िकतावाद ये शब्द का आप भरोसा करने वाले हैं? Brother Bob, would you trust the word of a atheistic Nazi? तो मेरे भाई बॉब, क्या आप ये नाज़ी शब्द पे भरोसा करते हैं जो नास्तिक से? And now what they did was, after the war, they took all the Nazis and they deprogrammed them to not hate Jewish people. तो द्वितीय युद्ध के बाद क्या किया गया, नाज़ी लोगों को फिर से तैयार किया गया, अपने प्रोग्रामिंग किया गया कि वो ज्यूज के लोगों से नफरत ना करें। Everything else is fine. सब कुछ ठीक था, But just instead of Jews, you have to make it Russians now. अब ज्यूज को हटा के अब उन्होंने बना दिया है आपको रूसी लोगों से नफरत करना है। That's only change. यही एकमात्र परिवर्तन किया है। Same hatred, same demoniac nature. वही नफरत है उनके अंदर, वही असुरी गुण है। Now, Bhagavatam is right in front of us, isn't it? भागवतम हमारे सामने है बिल्कुल। If we have eyes to see, अगर understand. हमारे पास आंखें हैं देखने के लिए और समझ पाने के लिए। So, questions, points, प्रश्न या कोई बात, complaints. कोई शिकायत? Yes, Srivas. How did I lose you, man? कैसे मैं Didn't we आपको भूल start गया? off like that? क्या हमने ऐसे तो आपसे शुरुआत की थी? This is what happens. I have, what do they call it? Attention deficit disorder. ये मेरी समस्या है, मैं जो है मेरा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, This is a problem. ये समस्या I'm a है। little distracted. मैं थोड़ा भटक गया था, I got a few problems. कुछ समस्या आ गए थे मेरे सामने, I get some problem cases. कुछ समस्या वाले केस आ गए थे I मेरे get a सामने, little distracted. मैं थोड़ा भटक गया था उधर। So what is it? क्या है? I'll try to be nice. मैं अच्छा होने का प्रयास करूंगा इस बार, I'll try to be humble. मैं विनम्र बनने का प्रयास करूंगा। The question is, if somebody has Krishna prema and he is not in parampara, can he You give? cannot get Krishna prema without being in parampara. तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर किसी के पास कृष्ण प्रेम है लेकिन वो परंपरा में नहीं है, तो गुरुदेव बता रहे हैं आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता अगर आप परंपरा में नहीं है तो Impossible. असंभव। Only Krishna gives Krishna prema and he comes as Mahaprabhu. केवल कृष्ण प्रेम दे सकते हैं और वो महाप्रभु के रूप में आते हैं। So unless you surrender and get mercy in Mahaprabhu's parampara, there's no chance of getting Krishna prema. तो अगर आप शरणागत नहीं करेंगे, कृपा नहीं पाएंगे महाप्रभु के परंपरा से, तो आपको कृष्ण प्रेम पाने का कोई संभावना नहीं है। That's where Krishna is giving Krishna prema. वहीं पे कृष्ण प्रेम देंगे। That's why Prabhupada says, somehow or other, this is the mystery of disciplic succession. You must know it. और श्री प्रभु बताते हैं कि ये परंपरा का रहस्य है और आपको ये जानने की जरूरत है। Otherwise, unless you catch up, that Prabhupada says, unless you catch up that disciplic succession parampara, इसलिए प्रभु बताते हैं अगर आप इस प्रमाणिक वर्तमान में मौजूद परंपरा को पकड़ेंगे नहीं, your intelligence will always be bewildered in terms of understanding the absolute truth. आपकी बुद्धि हमेशा भ्रमित रहेगी कि आप परम सत्य को समझ नहीं पाएंगे। What to speak of getting Krishna prema. तो कृष्ण प्रेम पाने का क्या सवाल उठता है?
So I disagree with the premise of the question. तो मैं इस सवाल की परिस्थिति से संतुष्ट नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। But let's hear the rest of the question. चलिए हम बाकी के प्रश्न के बाकी का भाग भी सुनते हैं। So then, is it possible that he can give Krishna prema to others? You can't, if you're not in the parampara, अगर आप परंपरा में नहीं हैं, and you're not hearing in that parampara, अगर आप परंपरा में श्रवण नहीं कर रहे हैं, you cannot, if you don't hear from Tattvavid Guru, अगर आप तत्वविद गुरु से नहीं सुनेंगे, Tattvadashi Guru, तत्वदर्शी गुरु से, you cannot develop sufficient purification पहले तो आप पर्याप्त शुद्धिकरण नहीं पा सकते, or faith या श्रद्धा, or transcendental knowledge, unflinching faith in Guru Sadhana Shastra, या दिव्य ज्ञान और गुरु साधु शास्त्र में अटूट then श्रद्धा, you cannot chant Shuddha Nam. तब तक आप शुद्ध नाम नहीं कर सकते। And if you don't chant Shuddha Nam, you cannot get Krishna Prema. अगर आप शुद्ध नाम जप नहीं कर सकते तो आप कृष्ण प्रेम नहीं पा That's सकते। a process to get Krishna Prema. यही है प्रक्रिया कृष्ण प्रेम So if पाने we की। don't enter into that process and then perfect that process by the mercy of Guru Krishna, no one gets Krishna Prema. अगर इस प्रक्रिया में हम प्रवेश नहीं करते हैं, इस प्रक्रिया में सिद्ध नहीं होते हैं गुरु कृष्ण की कृपा से, किसी को कृष्ण प्रेम नहीं मिल So सकता। obviously if you don't have it, you can't give it. तो अवश्य हमारे पास है नहीं तो हम देंगे कैसे किसी को? First you have to get it, पहले हमें पाना होगा and then we have to deserve it to get it. It's a gift. और हमें उसके लायक बनना होगा उसको पाने के लिए, क्योंकि ये एक उपहार है। So one of the persons I met in the beginning said, if you're my guru, it says the guru gives Krishna Prema, you should give me Krishna Prema. एक व्यक्ति से मैं शुरुआत में मिला, उन्होंने मुझसे कहा कि आप गुरु हैं, गुरु का काम है कृष्ण प्रेम देना, तो मुझे अभी कृष्ण प्रेम दीजिए। The only thing missing in that exchange was he didn't have a gun to my head. उस बातचीत It was like a shakedown. उस बातचीत के बीच में बस एक ही चीज की कमी थी, एक बंदूक की, बस मेरे सर पे एक बंदूक टांग के वो कहना चाहिए था कि दिव्य तरीके से वो कृष्ण प्रेम देने का प्रयास करता। I want it now. अभी दीजिए मुझे कृष्ण प्रेम। That's not exactly like submissive of a reception. ये विनीत भाव से श्रवण करना नहीं हुआ। Krishna says, as you surrender to me, then I reward you accordingly. कृष्ण बता रहे, जिस तरीके से आप मुझे शरणागत करेंगे, मैं वैसा ही आपको फल दूंगा। So without surrendering, how we can demand and expect anything? तो अगर हम शरणागत नहीं कर रहे, तो कैसे हम किसी भी चीज की मांग या अपेक्षा कर सकते हैं? And then some people I know, they ask Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, can you show me God? और कुछ लोग श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछते थे, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? And he said, I think it was that he said that if you follow the process that I'm giving you, then absolutely you will see God. तो वहाँ कहा करते थे, अगर आप उस प्रक्रिया का पालन करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो अवश्य आप भगवान को देख पाएंगे। And then they asked him, can you see God? और फिर वो पूछते थे कि आप भगवान को देख सकते हैं? And then he explained that if I say yes, तो फिर वो कहते थे, अगर मैं कहूँ मैं हाँ, मैं देख सकता हूँ, then do you really have enough to even say whether it's true or not what I'm telling you if I say yes? तो अगर मैं आपको हाँ कह दूँ, तो क्या आप समझ पाएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? So it's a nonsensical question. तो ये पूरी तरह से बकवास सवाल है। What if I say yes? Then are you going to accept my saying yes? अगर मैं हाँ कह दूँ, क्या आप स्वीकार कर लेंगे मेरी बात को? You have the ability to measure that and to realize that? क्या आपके पास क्षमता है उसको माप पाने का और उसको साक्षात्कार कर पाने का? Another question? और कोई प्रश्न है? If God wants us to engage in bhakti on this earth, like Mahaprabhu, then why we want to go to Vaikuntha to do bhakti there? Why we don't want to do it here? If you get Krishna Prema and you want to come here and participate in Mahaprabhu's Leela to save the fallen conditioned souls, then Krishna may allow you to come. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि अगर महाप्रभु कृष्ण हमें बता रहे हैं कि हमें भक्ति करने के लिए जगह बनाई गई है, तो क्यों हम भगवत धाम जाके वहाँ भक्ति करें, हम यहाँ रह के क्यों भक्ति नहीं कर सकते? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, अगर आप कृष्ण प्रेम पाकर महाप्रभु की परंपरा में पतित पावन की लीलाओं में भाग लेना चाहते हैं, कैसे पतित जीवों का उद्धार किया जाए, तो हो सकता है कृष्ण आपको अनुमति देंगे इस लीला में आने के लिए। And then if we completely surrender to Krishna, and we want to serving him in loving devotion, that's up to him how and where he wants to engage you in seva. अगर आप कृष्ण को शरणागत करना चाहते हैं, प्रेम और भक्ति भाव से उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो ये कृष्णा के ऊपर है वो कहाँ और कैसे आपको अपनी सेवा में लगाएंगे।
whatever makes him happy. जो भी कृष्णा को सुखी बनाएगा. Even you can, if you want you to go, the Bali Maharaj said, even if I go to the hellish planets, बलि महाराज ने कहा अगर मुझे नरक में लोक में भी जाना पड़े, if I'm with you and you're with me, then that's also already Vaikuntha, already Vrindavan. अगर आप मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ तो वो पहले से ही वैकुंठ है. What's happening, Gopal? क्या हो रहा है गोपाल? What is your question? आपका क्या प्रश्न है? I was telling Prabhu, the question which was asked was something different. What did he say? Srivas? The question is in Hindi, so I translate it to translation, and he's saying that this translator is not translating properly. What is the actual translation? It is said that the demigods want to come to earth to practice bhakti. What was the translation, Srivas? The demigods. The demigods want to come to practice bhakti here on the earth. Then what is the need of us to go to Vaikuntha to practice bhakti? Yes, because the demigods, we just read that recently, they can't go from the heavenly planets directly to Golok Vrindavan. तो हम पिछले गुरु का प्रश्न है कि बताया कि देवी देवता धरती में आके भक्ति का अभ्यास करना चाहते हैं, तो हम क्यों प्रयास करें कि हम वैकुंठ लोक में जाके भक्ति करें? तो गुरुदेव बता रहे हैं कि स्वर्ग लोकों में देवताओं के पास मौका नहीं होता है कि वहाँ भक्ति का अभ्यास करके वो वैकुंठ जा सकें. So they have to take birth in Mahaprabhu's Premanam Sankirtan mission. तो उन्हें प्रकट होना होगा, महाप्रभु के प्रेम नाम संकीर्तन में आना होगा. So whoever wants to, from the material higher, middle, lower planetary system, whoever wants to go to Goloka Vrindavan as final destination point, they have to take birth and participate in Mahaprabhu's Premanam Sankirtan mission. Otherwise, nobody can go to Goloka Vrindavan. तो जो ये भौतिक जगत के ऊपर के लोग, नीचे के लोग और बीच के लोग, किसी भी लोग से अगर कोई गोलोक वृंदावन धाम जाना चाहता है तो उसे महाप्रभु के इस प्रेम नाम संकीर्तन आंदोलन में आके प्रकट लेके भाग लेना होगा. Because only Krishna gives prema through Sri Chaitanya Mahaprabhu. क्योंकि कृष्णा प्रेम देते हैं केवल चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से. In that Yuga Dharma Prema Nam Sankirtan. और उनके युग धर्म प्रेम नाम संकीर्तन. So if you're not in Mahaprabhu's parampara doing that Yuga Dharma Prema Nam Sankirtan, then how you'll get Krishna Prema? तो अगर आप महाप्रभु की परंपरा में युग धर्म प्रेम नाम संकीर्तन नहीं कर रहे हैं तो कैसे आप कृष्ण प्रेम प्राप्ति That's कर पाएंगे? where and how Krishna gives Krishna Prema. वहीं पे और उसी तरीके से कृष्ण प्रेम देते हैं. And without that, how you go back to Goloka Vrindavan? और इसके बिना कैसे आप गोलोक वृंदावन वापस जा सकते हैं? How you go to Srimati Radharani? कैसे आप श्रीमती राधा रानी के पास जा सकते हैं? If you want to go to, Lord Ram's planet, say, अगर आप भगवान राम के लोक में जाना चाहते हैं or some other Vaikuntha planet. या किसी अन्य वैकुंठ लोक में जाना चाहते हैं. So if you say you want and your final destination is Golok Vrindavan, that means you need Krishna Prema. तो अगर आप कहते हैं आपका अंतिम लक्ष्य गोलोक वृंदावन जाना है तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्ति And करना without होगा. Mahaprabhu and Mahaprabhu's parampara mercy, no one can get Krishna Prema. और बिना महाप्रभु के परंपरा की कृपा पाए बिना कोई भी कृष्ण प्रेम नहीं पा सकता. That's the chief result of chanting Shuddha Nam in Mahaprabhu's parampara, is you get the Krishna Prema. कि जब करने का अंतिम लक्ष्य फल ये होता है महाप्रभु की परंपरा में आपको कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगा. So why in other yugas people are chanting holy name? तो अन्य युगों में भी लोग भगवान का नाम कीर्तन कर They're रहे हैं. purified enough to go to Vaikuntha, वो इतने शुद्ध हो जाते हैं कि वैकुंठ लोग जा सकते हैं. and they go to Vaikuntha और वो जाते हैं वैकुंठ लोग if they perfected, अगर वो उसको सिद्धि प्राप्त but कर they पाते don't हैं. go to Goloka Vrindavan. लेकिन वो गोलोक वृंदावन नहीं जा पाते. Premanam Sankirtan means Mahaprabhu, means Golok Vrindavan. प्रेम नाम संकीर्तन का मतलब है महाप्रभु, इसका मतलब गोलोक वृंदावन. In the 4 rasas. 4 रसों में. Does that answer it? क्या प्रश्न का उत्तर हुआ? So demigods have to come take birth in this planet where Mahaprabhu is coming and spreading Premanam Sankirtan mission. They must take birth and participate in and get mercy in Mahaprabhu's parampara. तो देवी देवताओं को आना होगा, यहाँ प्रकट होना होगा, महाप्रभु के परंपरा में आके प्रेम नाम संकीर्तन में भाग लेना होगा. But I have a question for you. लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सवाल है. Since this earth planet is also destroyed, क्योंकि ये पृथ्वी जगत भी एक दिन खत्म होने वाला है.
then where did they go? तब वो कहाँ जाते हैं? This is temporary manifestation. क्योंकि ये अनित्य जगह है। So is there another earth? क्या Or is it basically, you could say there's another Bhartavarsha? तो क्या कोई दूसरा पृथ्वी लोक है या कोई दूसरा भारतवर्ष भी है? So when Krishna comes, wherever he comes and he brings Vedic culture, Krishna culture, he brings the Dham, he brings his devotees, that's Bhartavarsha. तो कृष्णा जहाँ भी जाते हैं अपनी वैदिक संस्कृति को लेके, अपने धाम को लेके, अपने भक्तों को लेके वहाँ आते हैं और वही भारतवर्ष होता है। Otherwise, what's left of the Earth planet after, the end of annihilation of the temporary material manifestation? तो जब सृष्टि का विनाश होगा इस अनित्य भौतिक जगत का, तो इस पृथ्वी लोक पे क्या बाकी रह जाएगा? This is not an eternal place. ये कोई नित्य जगह नहीं है। The energy is eternally manifested ये शक्ति नित्य रूप से मौजूद रहती है, in a different form, लेकिन अलग रूप में। but is that then called Earth again? तो क्या लेकिन उसको वापस से पृथ्वी लोक कहा जा सकता है? Probably not. हो सकता है नहीं। But if you say Bhartavarsha, that means that place where Krishna comes and enacts his pastimes, लेकिन अगर कहेंगे भारतवर्ष तो यानी कि वो जगह जहाँ कृष्ण आते हैं और अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं, where he brings his dhams to that place. और वो अपना धाम उस जगह में He लेकर brings आते हैं। his culture, he brings Vedic culture, he brings Krishna culture, he brings his devotees. वो अपनी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, कृष्ण की संस्कृति लेके आते हैं, अपने भक्तों को लेके आते So हैं। in that place, after Dwapar Yuga, then Sri Chaitanya Mahaprabhu comes. तो उस जगह में द्वापर युग के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। So I think it's what's 1,000 day of Brahma, तो ब्रह्मा जी के एक दिन, cycle, 1000 दिन 1,000 cycles of all the yugas, और हजार 1000 चक्र होने के बाद 4 युग का, which is 1 day of Lord Brahma. ब्रह्मा का एक दिन होता है। At that time, Krishna comes in Dwapar Yuga, not every Dwapar Yuga. और उस द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, हर द्वापर युग में कृष्ण नहीं आते। And in that Dwapar Yuga, 1,000 cycles of the yugas, 1 day of Lord Brahma, then Sri Chaitanya Mahaprabhu comes in the Kali Yuga. तो ऐसे 1000 युगों के 1000 चक्र जब पूरे होते हैं 4 युगों के, उसमें से एक युग में द्वापर युग में कृष्ण प्रकट होते हैं, महाप्रभु प्रकट होते हैं। So wherever that, here's another question: is और एक और प्रश्न, what if there's other universes? Is it possible that there's a Dwapar Yuga going on right now in another universe, क्या हुआ and this is Kali Yuga here? कोई दूसरे ब्रह्मांड में द्वापर युग चल रहा हो और यहाँ पे कलयुग में चल रहा है इस ब्रह्मांड में? Right? They're not all being created and destroyed exactly at the same time, सबका निर्माण और विनाश एक ही समय में नहीं होता because you है, have unlimited universes. क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है। Right, so is there at a time of annihilation, are the unlimited material universes all destroyed at the same time? क्या जब सृष्टि का विनाश होता है तो ये अनंत ब्रह्मांड एक बार में सभी का विनाश हो जाता है? क्या ऐसा होता है? Then how is it said that these leelas are always going on? लेकिन ये कैसे कहते हैं ये सारी लीलाएं नित्य चलती रहती हैं? That means there has to be a Dwapar Yuga, 1 day in one Brahma in one universe somewhere. इसका मतलब एक द्वापर युग किसी ब्रह्मा के एक दिन में किसी ब्रह्मांड में हो रहा है, Otherwise, how is that leela perpetually going on? वरना कैसे ये लीला निरंतर रूप से चलती रहती है? So we must, but the principle is that we must take a birth in Mahaprabhu's Premanam Sankirtan movement. लेकिन सबसे मूल सिद्धांत ये है कि हमारे महाप्रभु के प्रेम नाम संकीर्तन आंदोलन में हमें जन्म लेना होगा। If we want to get out of any planet in the material, atmosphere, अगर इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी लोक से हम बाहर निकल go के back to Goloka गोलोक Vrindavan. वृंदावन वापस जाना चाहते हैं तो That's my understanding. ये मेरी समझ है। Sounds right. सुनने में सही लगता है। That's why understanding parampara is so critical. इसलिए परंपरा को समझना इतना महत्वपूर्ण है। So if one really wants Krishna,
तो अगर कोई असल में कृष्ण को चाहता है, really wants to be with Krishna and go back to Krishna, and Krishna is the witness and judge of that. अगर कोई कृष्ण के साथ रहना चाहता है, कृष्ण के पास वापस जाना चाहता है, तो कृष्ण उस बात के गवाह है, वो उसके न्याय करता है. Then his reciprocation and mercy is he'll send you bona fide guru who's in his parampara. तो कृष्ण अपनी कृपा देंगे कि वो एक प्रमाणिक गुरु परंपरा में आपको भेजेंगे. But Prabhupada said hardly anybody wants to go back to Godhead. लेकिन प्रभु बताते हैं कि मुश्किल से ही किसी को Hardly भगवान वापस जाने anybody की is इच्छा है. serious. मुश्किल से ही कोई गंभीर है. We read last night that Prabhupada was saying if you're attached to your body and bodily relations, you have no access or interest in spiritual life. प्रभु बताते हैं अगर आपको अपने शरीर या शरीर के संबंधों के प्रति आसक्ति है, तो आपको आध्यात्मिक जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं होगी. So all of those people will have revelation and understanding, intelligence and faith of understanding the mystery of parampara, disciplic succession. तो ऐसे लोगों को क्या प्रकाशित होगा और परंपरा का रहस्य उनके सामने प्रकाशित होगा. Everybody deserves that kind of guru. क्या सभी लोग इस तरह के गुरु के लायक हैं? Think about it. सोचिए इसके बारे में. Anything else? कोई अन्य बात? Yeah. I hope I didn't offend any of those mystic gurus over there in Russia. मुझे उम्मीद है जो रूस के जो मिस्टिक योगी गुरु हैं, उनको मैंने उनके प्रति कोई अपराध नहीं किया. I don't want some S-500 mother of all bombs hitting me on the head, you know. मैं नहीं चाहता कुछ S-500 या सारे बमों के वहाँ मेरे ऊपर आके फटे. But then if you're thinking about Krishna or you're preaching about Krishna and Krishna Prema, and if that bomb hits you, what a wonderful way to go, isn't it? अगर आप कृष्ण के बारे में प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, कृष्ण प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, और उस समय आपके ऊपर आके बम फटता है, तो ये सबसे अच्छा समय है मरने के लिए. Imagine we're sitting here, we're talking about Hari-katha Krishna-katha by Mahaprabhu's mercy to go back to Goloka Vrindavan, and then a bomb just like wipes out this building, and we all instantly die. कल्पना कीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि महाप्रभु की परंपरा में कैसे हम महाप्रभु की कृपा पाके कृष्ण प्रेम प्राप्ति करके गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, और अचानक से कोई बम आए और पूरी बिल्डिंग को उड़ा दे और हम सब तुरंत मर जाए. That would be fantastic. वो सबसे अच्छा समय होगा. And then the leaders here, they'll say, Murali is getting ready to commit suicide with all of his followers. और यहाँ के कुछ जो नेता हैं इस्कॉन के, वो ये कहेंगे मुरली जो है आत्महत्या करने के लिए तैयार है. Don't drink the water, the Kool-Aid. जो पानी मत पीजिएगा. He's telling everybody they're ready to go back to Goloka Vrindavan. वो सबको ये कह रहा है कि सब लोग तैयार हो जाओ गोलोक वृंदावन जाने के लिए. It's a suicide mission. आत्महत्या का मिशन. Make sure you check their clothes, they don't have like a vest on, you know? आप चेक कर लीजिएगा कि जो कपड़े पहने हैं उसके अंदर कुछ बम न लगा कर रखे हो कि वो उड़ जाए. Praying in front of Gonditai. और ऐसा को प्रार्थना करेंगे और अपना बम से अपने आप को उड़ा देंगे. Allah Akbar. All glories to God, what's the problem? उसका मतलब यही है भगवान का गुणगान हो. If you don't see me tomorrow, you'll know what happened. अगर कल मैं दिखाई न दूँ तो आप समझ जाना मैंने क्या किया. Please lock the doors tonight. Whoever's in charge of security, you know. मेरा कमरा बंद करके रखना, जो भी सिक्योरिटी के इंचार्ज है यहाँ पे. Make sure all the lights are on, you know. और ध्यान रखना सारे बत्ती चले रहे. I'm sorry, I'm very unfiltered sometimes. मुझे क्षमा कीजिए, कई बार मैं बिना किसी I छाट think it's के part बात of my करता हूँ. attention deficit disorder. क्योंकि मैं ध्यान मेरा भटक जाता है, ये मेरे अंदर एक बीमारी है. So, oh yes, I'm sorry. At least you're smiling, that's कम से कम वो good. मुस्कुरा रही है, अच्छी बात है. Yeah. So if somebody like some service, he has a service, say worshiping the deities, and he has a bona fide spiritual master, and he is hearing from him, and say he achieved perfection and got Krishna Prema, is it necessary that spiritual master will give him instruction to go and preach, or he will just continue his other service? It just depends what is your nature and your ability and what service does Krishna want you to do.
तो माता जी पूछ रही हैं अगर कैसा हो, अगर किसी को यहाँ सेवा मिली हो विग्रहों की सेवा करने की और प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में वो स्वयं को योग्य बना के भगवत धाम वापस जाते हैं, तो क्या उनको वापस से वही सेवा करने का मौका मिलेगा या उनको प्रचार करने का आदेश दिया जा सकता है? गुरुदेव बता रहे हैं कि आपके स्वभाव, आपकी क्षमता और कृष्ण की इच्छा के ऊपर आधारित है वो किस तरह आपको अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। There's unlimited services. क्योंकि असीमित सेवाएं, अनंत सेवाएं। You know, you're in Golok Vrindavan, it's like, you know, where's all the garlands, you know? And the gopis are like, you know, they all went for preaching, you know? The garlands to give to Krishna. जैसे आप लोग वृंदावन में जाएंगे कि माला बनाने के लिए कहाँ है, तो कहेंगे वो सब प्रचार करने के लिए चले गए हैं, कोई माला बनाने के लिए कोई मौजूद नहीं है। Everybody's on a preaching mission right now. सभी कोई जो है प्रचार करने के लिए गए हुए हैं, तो कोई है नहीं यहाँ पे माला बनाने। Krishna probably wouldn't mind anyway, कृष्णा को वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, but maybe his devotees might mind. लेकिन उनके भक्तों को अवश्य फर्क पड़ेगा। So there's unlimited, absolute savers. They're all perfect. They're all absolute. तो अनंत सेवाएं हैं और सभी परम स्तर पे हैं। It's just what does Krishna want? तो सवाल ये है कि कृष्णा क्या चाहते हैं? And Krishna says, better you do your service, even if you do it imperfectly, than try to do somebody else's service perfectly. और कृष्णा ने ये बात कही है, अगर आप अपनी सेवा हो सकता है आप पूर्ण तरीके से करें, लेकिन दूसरे की सेवा पूर्ण तरीके से ना करें। So whatever Krishna wants, Guru knows what is Krishna's intention for us, and then you just make that your life and soul. तो कृष्ण हमसे जो भी चाहते हैं, गुरु उस उद्देश्य, कृष्ण के उद्देश्य को जानते हैं, तो हमें उसे ही अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। Then it's perfect. तो ये पूर्ण होगा। If they want to change it or add something or subtract something from you, they'll directly give you some instruction. अगर वो उसको बदलना चाहते हैं, उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो वो सीधे सीधे आपको निर्देश देंगे। And then if no instruction is automatically coming, then just carry on doing what you're doing. Be peaceful. और अगर कोई आपको निर्देश नहीं मिल रहा है आगे और, तो जो आपको निर्देश पहले से मिल चुके हैं उसको आप शांति से करने का प्रयास कीजिए। And if Krishna wants more, then Guru devotees will tell you, try to do more. और अगर कृष्ण और ज्यादा चाहेंगे आपसे करवाना, तो गुरु या भक्त आपको बताएंगे आप और करने का प्रयास कीजिए। Because Guru Krishna, they're always going to try to, you know, stretch us. क्योंकि गुरु कृष्ण हमेशा हमें खींचने का प्रयास करेंगे। Because we get very complacent. क्योंकि हम बहुत ढीले ढाले हो जाते हैं। Right? But the whole idea is we're supposed to be, you know, improving and more qualifying ourselves. लेकिन ये पूरी प्रक्रिया ये है कैसे हम स्वयं को उन्नत बनाएं और ज्यादा योग्यवान बनाते जाएं। That means that there's more and more opportunity, the more qualified and more responsible we become, the more seva can be given to you. तो जितना ज्यादा आप योग्यवान बनेंगे, उतना ज्यादा आपको मौका मिलेगा और उतनी ज्यादा आप सेवाएं कर पाएंगे। So also that can change. तो वो भी बदला जा सकता है। And then it's not only just external, it's also internal. और ये केवल बाहर से नहीं है, भीतर से भी किया जाता है। So it's not just an external execution of that service. Of course, it's not really, if we're doing it properly, it's not really external, but you could develop yourself internally unlimitedly. तो ये केवल बाहरी रूप से सेवा How करने का, stagnated are we there internally, spiritually? केवल बाहरी रूप से सेवा नहीं करना है, भीतर से भी भीतरी रूप से अपने आप को असीमित रूप से प्रगति कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और अवश्य वो बाहरी नहीं होगा अगर आप उसको सही तरीके से करेंगे तो भी। So there's plenty of work to do. तो बहुत सारा कार्य जो हमें करना है, There's plenty of internal service to cultivate. और बहुत सारा भीतरी सेवा अभी भी हमें Even विकसित though करने की जरूरत externally it looks like you're doing the same simple seva. है। तो बाहर से देखने में ऐसा लग सकता है कि आप वही एक सरल सेवा करते जा रहे हैं। Understand? आप समझ पाए? All right. Any last thing? कोई आखिरी चीज? No. In our parampara, after Srila Prabhupada was only Srimad Gaurav Swami Maharaj who was qualified to become a guru. People like only Srimad Gaurav Swami Maharaj after Srila Prabhupada was qualified to become a guru, else no one. Yes. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि श्री प्रभुपाद के बाद केवल श्री गौरव स्वामी महाराज थे योग्य गुरु बनने के लिए, तो गुरुदेव ने बताया बिल्कुल हाँ। Next. Drop the mic. माइक गिरा देने वाला हूँ। The mic moments, right? Don't they say like that? ऐसे कहा जाता है, माइक गिरा देने वाला चल रहा है। इसके आगे कोई बात नहीं। Everyone, thank you. Oh yes. Yes.
Pick up the mic, fix the mic. माइक उठा के अब ठीक करना होगा. How to always go deeper in service? How to always go deeper in service? How to always go deeper in service. कैसे आप सदैव अपनी सेवा में और गहराई में जा सकते हैं? Desire it. पहले इच्छा कीजिए. If you realize it's not deep enough, and it must go deep enough, and you increase your desire to understand that and to reach Krishna, to get Krishna, then Krishna says, I'll give you intelligence and faith how to do it. तो अगर आप It's देख पा based रहे हैं, on desire and strength of desire. तो अगर आप ये देख पा रहे हैं ये उतना गहरा नहीं है और गहरा अवश्य जाना चाहिए, तो आपको सबसे पहले ये इच्छा आपको अंदर लानी पड़ेगी और कृष्णा को आश्वस्त करना पड़ेगा और ये आपकी इच्छा और आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर आधारित है. All we can do is desire. केवल हम एक ही मात्र कार्य कर सकते हैं, इच्छा करना. And if that desire is intensified, then we convince Krishna. Krishna says, I'll give you intelligence and faith how to do it. और अगर ये हमारी इच्छा बहुत तीव्र हो जाएगी तो कृष्णा कहते हैं उसको उस बात को समझ पाएंगे, वो बुद्धि देंगे और श्रद्धा देंगे उसको कर पाने के लिए. So without the intensified desire, then how can we expect the intelligence and faith how to do it? तो अगर हमारी इच्छा तीव्र नहीं होगी तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं, हमें बुद्धि मिलेगी, श्रद्धा मिलेगी, कैसे हम उसको कर पाएंगे? So first, deserve it. तो पहले उसके लायक बनिए And desire और it. फिर इच्छा कीजिए. Then automatically intelligence and faith will come internally, externally to the Shastra. तो अपने यहाँ पे बुद्धि आएगी, श्रद्धा आएगी, भीतर से, बाहर से और शास्त्र के माध्यम से. But that's good that you're thinking, okay, I need to go deeper. I लेकिन need अच्छी बात है, आप सोचने का to प्रयास करें, मुझे और get गहराई out में of जाने my की जरूरत है. complacency. मैं थोड़ी ढीले ढाला हो रहा हूँ I need to get serious. The clock is ticking. क्योंकि घड़ी घूम रही है. Nobody can say how long this is going to go. कोई ये नहीं कह सकता कितना हमारा समय है. So we should take it more seriously. That's a good sign. इसे और गंभीरता से रहना चाहिए. ये अच्छा We're not संकेत है. satisfied where we are. हम उसे संतुष्ट नहीं है जहाँ It's अभी not मैं acceptable. इसको स्वीकार नहीं किया जा It सकता. must change. इसे अवश्य बदलना होगा. And now we have to intensify our desire and deserve to get intelligence and faith how practically to do it. अब अपनी इच्छा को हमें और तीव्र बनाना होगा और उस लायक बनना होगा कि हमें बुद्धि मिले, श्रद्धा मिले, हम कैसे इसको कर पाएं. All right? Desire, strength of desire. इच्छा और इच्छा शक्ति. Yes. Yes, young man. बोलिए जवान व्यक्ति. Did you understand my English? क्या आप मेरी अंग्रेजी समझ पा रहे हैं? Yeah. ठीक है. Hare Krishna, Shila I don't understand my English. मैं उनकी अंग्रेजी नहीं समझ पाता हूँ. So yesterday you were explaining Srila Prabhupada saying in the purport that by concentrating the mind upon Krishna in full Krishna consciousness, one can understand him in full. So what is that process to concentrate? You're a little philosopher all of a sudden, right? अचानक से आप बहुत बड़े दार्शनिक बन गए हैं. Like last week we said that you can start to read some books, right? Now he's like a philosopher already. पिछले कुछ हफ्ते बात कर रहे थे कि मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ, अचानक से पूरे दार्शनिक बन गए. Who was holding you back from this potential? कौन आपको इस शक्ति से रोक कर रखा था? किसने आपको? Sanatan, did you know you had a philosopher with you? सनातन, आपको पता था आपके पास कोई दार्शनिक है मौजूद? So what is his point? तो क्या बात कहना चाह रहे हो? What did he say? क्या कहा उन्होंने? Did you hear your friend? क्या अपने मित्र का सुन पाए? He's saying that Are you being shy or you just don't know? शर्मा रहे हैं, आपको पता नहीं है. he was saying yesterday, you were reading that by concentrating your mind on Krishna, we can know him in full. So he's asking, what is the process to know him in full? Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि कल आपने बताया था कि हम कृष्ण को जान सकते हैं अगर हम अपना पूर्ण मन उनमें एकाग्र करें. Dedication to hearing and chanting in the right association. तो गुरुदेव बता रहे हैं अगर हम पूर्ण तरीके से श्रवण कीर्तन में अपने आप को समर्पित करें as much as possible. जितना ज्यादा संभव हो सके. This has to be priority. ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए. If we're serious about the spiritual, अगर हम आध्यात्मिक जीवन के लिए गंभीर हैं.
That's the, what do you say, that's the prerequisite. ये पहली योग्यता है। Otherwise, where you do Shravanam and Kirtanam? वरना कहाँ आप श्रवणम और कीर्तनम करेंगे? So forget about remembering. तो भूल जाइए स्मरण को। So without association with right devotees, there's not proper Shravanam Kirtanam, there's not remembrance of Krishna. तो सही भक्तों का संग नहीं करेंगे तो श्रवण कीर्तन नहीं होगा, तो कृष्णा का स्मरण भी नहीं हो सकता। All right? ठीक है? Yes. You look like you're going through the battle, man. आपको देख के ऐसा लग रहा है कि हम युद्ध से गुजर रहे हैं। It's like World War III already. ऐसा लग रहा है तीसरा विश्व युद्ध पहले ही शुरू हो गया है। This is very light discussion. What's the problem? क्या हल्की फुल्की बात हो रही है, इसमें समस्या क्या है? It's the Bombs, mother of all bombs, World War III. बम, सारे बमों की माँ और तीसरा विश्व युद्ध। Chopping, cutting, slashing. काटना, छाटना। Yes. Dhruva Maharaj had material desire. What? Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj? Dhruva Maharaj had some material desire. Yes. But he was lucky enough to get the right guru. कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज के पास भौतिक इच्छाएं थी, गुरुदेव बता रहे हैं, लेकिन इतने भाग्यवान थे कि उनको सही गुरु मिल पाए। So is that why he was fixed in his determination? Because that verse that says in the Bhagavad Gita that those who are too attached to, who have some material desires, they cannot be fixed. He had association with pure Vaishnava. That pure Vaishnava had compassion and mercy on him. He knows he's just a small boy. He doesn't even know what he's asking for. And he didn't give him vanchana. He gave him kripa. He gave him mercy. And then he became pure devotee. तो प्रभु बता रहे हैं, भगवद गीता में बताया गया है कि अगर भौतिक इच्छाएं हों, आसक्तियां हों, तो वो दृढ़ निश्चय नहीं रख सकते कृष्ण को पाने के लिए। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि उनको शुद्ध भक्त का संग मिला, उन्होंने उनको कृपा दी, करुणा दी, और उन्होंने उनको ठगा नहीं, क्योंकि देखा ये बहुत सरल बच्चे हैं और ये कृष्ण को पाने के लिए इनको पता नहीं है क्या मांग रहे हैं, तो उनको उन्होंने कृपा दी वांछना के बजाय। That's the potency and mercy of Sadhu Guru Vaishnava. ये साधु गुरु वैष्णव की कृपा की शक्ति है। Even when not qualified, हो सकता है आप योग्य ना हो, not really devoted, असल में भक्त भी ना we have हो, all gross subtle material desires and attachments. सारी स्थूल या सूक्ष्म भौतिक इच्छाएं Still, आसक्तियां out हों, of cosmos mercy, फिर भी अहेतु की कृपा देने के they लिए purify us. वो हमें शुद्ध करते हैं। Prabhupada said, I cheated you. प्रभुपाद कहते हैं मैंने आपको ठग दिया, Because he said, just chant, dance, take prasad, go back to Godhead. उन्होंने कहा कि जब करो, नाचो, गाओ, प्रसाद दो और भगवत धाम वापस चले जाओ। That sounds easy enough. सुनने में बहुत आसान लग रहा था, And you get all the fulfillment of your desires. और आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। Okay, let me try. चलिए मैं प्रयास करता हूँ। Then as you're going, और जब आगे बढ़ते हैं, then you're going through purification. तो आप शुद्धिकरण से गुजरते हैं, And then we're starting to understand, we're starting to come to what is the reality of the situation. और हम फिर ये समझना शुरू कर पाते हैं कि हमारी असल स्थिति की सच्चाई And क्या we है। may start to think, this is automatically knowledge and detachment from all things material will manifest. तो आप देख पाएंगे स्वयं ज्ञान और वैराग्य सारी भौतिक चीजों से आपके अंदर आ जाएगा। So you get a higher taste and this other thing become lowest and more insignificant. तो आपको जब ऊंचा स्वाद मिलेगा तो ये सारी नीचे की चीजें आपके लिए तुच्छ होती जाएंगी, उनका स्वाद कम That's the होगा। result of doing bhakti. ये है भक्ति करने का फल। Association with Krishna and Krishna's pure devotee. Then Prabhupada said, even you had material desire, material attachment, by their mercy you can also be turned into pure devotee. तो कृष्णा और कृष्ण के शुद्ध भक्त का संग करके आप स्वयं को शुद्ध कर सकते हो सकते हैं आपके पास भौतिक इच्छाएं आसक्तियां हो और आप भी उनकी तरह शुद्ध भक्त बन So सकते हो they उनकी कृपा से। purify us, free us from karma, jnana and yoga. तो वो हमें शुद्ध करते हैं, मुक्त करते हैं कर्म, ज्ञान और योग And से, fix us up with stronger determination in path of bhakti. और हमारा दृढ़ निश्चय स्थापित करते हैं भक्ति के पथ में। That's the result of that association. और ये इस तरह संग करने का लाभ होता है। Do you want your own planet? क्या आप खुद का एक लोक चाहते हैं? Dhruva Maharaj, right? He wanted his own planet. ध्रुव महाराज अपना एक लोक चाहते थे, And then at the end, he didn't want any of it. और अंत में वो इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहते थे। And the Lord said, no, you wanted it. तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें चाहिए I'm ना, going to give it to you. लेकिन मैं आप तुमको दूंगा। And he was lamenting फिर वो शोक करने लगे because he didn't want it. क्योंकि वो चाहते नहीं थे।
But Krishna says, I'll give it to you in a way that you'll never ask for it again. कृष्ण ने कहा मैं तुमको ऐसे दूंगा कि दोबारा कभी उसके लिए मांगोगे नहीं, Because we have to learn. क्योंकि हमें सीखना है. Yeah. Krishna is detachment of every individual different categories, or is it like Sukriti? If every individual has a different Sukriti. It's like you can, like in computer, you can block certain things, right? So if you don't want to get rid of your bank account or your desire for a wife, right? You can just basically say, Krishna, these things you can take, right? But these things are not available right now. प्रभु पूछ रहे हैं कि जो हीरा शक्ति है कैसे आ सकती है, सुकृति से मिलती है या फिर इसका क्या प्रक्रिया है? तो गुरुदेव बता रहे हैं जैसे आप कंप्यूटर में कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हैं, क्या चीज़ें निकाली जा सकती, क्या चीज़ नहीं निकाली जा सकती. और कृष्णा कहते हैं मेरे अंदर की ये इच्छा है स्त्री पाने की, पत्नी पाने की और अलग अलग इच्छाओं को, ये चीज़ें आप नहीं निकाल सकते हैं और बाकी चीज़ें आप शुद्ध कर सकते हैं. Don't you have some administrative kind of capacity, right? तो कंप्यूटर में इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकार कुछ लोगों को आप अंदर इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं. So you can try to do that to Krishna. आप ये कृष्णा के साथ करने का प्रयास कर सकते हैं. But if he wants to take it, what can you do? लेकिन अगर कृष्णा वो लेना चाहेंगे तो आप क्या कर पाएंगे? It says, right, Krishna, if you're trying to hold it with 10 hands, Krishna will take it with 1 hand. कहते हैं अगर आप एक हाथ से बचाने का प्रयास करेंगे, कृष्णा 10 हाथों से उसको वापस से ले लेंगे. Right, and then if Krishna wants to, what is it? If Krishna wants to give you, right, with 10 hands, how much can you take with your 1 hand? तो कृष्णा जब आपको देना चाहेंगे तो आप 10 हाथों से जब आपको देंगे तो आप एक हाथ में कितनी चीजें रख पाएंगे? So what was the nature of the question? I'm sorry, I was seeing some administrative thing going on there. आपका प्रश्न क्या था? मैं असल मेरे सामने कुछ प्रशासनिक चीजें आने लगी. I was asking that detachment of every individual is in different categories. Oh, that's what triggered it. It's like he has different categories of material attachments. Some has different level of detachment. Someone has a different level of detachment with material things. Right. So the things you don't care about, right? That's like not so attached, right? तो प्रभु पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग अंदर अलग अलग चीजों के प्रति वैराग्य होता है. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि हाँ, जिन चीजों की आप उतना आपको परवाह नहीं होती है तो उससे उतना आसक्त नहीं होते हैं. So it's like, you can take that. तो आप कृष्ण कहते हैं आप ये चीज लेके जा सकते हैं मुझसे. I gave something. कि मैंने कुछ छोड़ा है. Right? But don't talk about the money. पैसे के बारे में कोई बात नहीं करना. You can talk about anything. उसके अलावा कुछ भी बात कर सकते हैं. But don't talk about the money. पैसे के बारे में बात नहीं करना. Right, so whatever we're mostly attached to, those topics are like taboo, like hands off, कि जो चीजें के प्रति हम आसक्त हैं, तो उनके विषय में बात करने के लिए हम बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहते हैं. So that's why there's bodily attachments. तो ये है शरीर की आसक्तियाँ. Right, and money, Prabhupada said, this is very, very deep-rooted attachment. बताते थे पैसा, ये बहुत ही गहरी आसक्तियाँ हैं. So, thick ropes and very deep anchors. तो मोटी रस्सियाँ और बहुत ही गहरे लंगर हैं. So if you realize that this also has to go, but this is not going to be easy to let go. तो आप समझ पा रहे हैं कि इसे छोड़ना है, लेकिन आप सत्कार कर पा रहे हैं, इतना आसान नहीं इनको छोड़ पाना. Especially when we don't even have a desire to let go. It's like little desire because you know it has to go, but besides that, it's like no real desire to let go. लेकिन कोई असल इच्छा नहीं है उसको छोड़ने की. कोई एक छोटी इच्छा जरूर है कि लोग पता है ये होना अच्छा नहीं है, तो लेकिन असल कोई इच्छा नहीं है उसको छोड़ने की. So that means it has to be forcibly taken. इसका मतलब वो जबरदस्ती हमसे लेना पड़ेगा. Because we can't even help ourselves. क्योंकि हम स्वयं भी मदद नहीं कर पा रहे. So if we submit ourselves to strong words of Sadhu, Guru, Vaishnava, and we surrender to the instruction, whatever purification that comes in the execution of that seva, then gradually this thing will be cut, shrunken. तो अगर हम प्रमाणी गुरु के सामने स्वयं को समर्पित करेंगे और साधु गुरु के तीखे शब्दों को श्रवण करेंगे और उनके निर्देशों को शरणागत करने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें काट छाट दी जाएंगी. So desire there, but it's not as powerful, it's not as strong, it's not as attached.
लेकिन उतनी तीव्र इच्छा नहीं है, उतनी ज्यादा आसक्ति को काटने की So इच्छा some नहीं of those things takes longer है। तो कुछ चीजें को पे समय ज्यादा समय लगेगा because the attachment is stronger. क्योंकि आसक्ति बहुत मजबूत है, बहुत गहरी है। Still it will go, but it may be the last things to go. तभी वो जाएंगे, लेकिन वो सबसे आखिरी चीज होंगी जो जाएंगे। Especially this pratishta, विशेष करके ये प्रतिष्ठा, wanting to be recognized, कि जाने wanting जाना to चाहते be हैं, liked, चाहते हैं लोग आपको पसंद करें, wanted to be worshipped, चाहते हैं respected, आपकी पूजा की जाए, सम्मान किया जाए। right? Even you have no money, still you're like, don't disrespect me. यहाँ तक कि आपके पास कोई पैसे ना हो, फिर भी कहेंगे मेरा अपमान मत कीजिए। So it says this is even worse than death if you're like disrespectful and your prestige is hurt. It's like more painful than death. कहते हैं कि मौत से भी ज्यादा बुरा होता है ये कि अगर किसी के मान की हानि हो जाए तो। That's why everyone becomes so emotionally disturbed. इसीलिए सब भावनात्मक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं। Because they feel disrespected. कि जब उनको अपने मान की हानि होती है। Right? They feel like they somehow they're being diminished. उनको लगता है कि उनको किसी तरह से नीचे गिराया जा रहा है। Big false ego, so much pride is there. और मिथ्या अहंकार इतना बड़ा है, दंभ है इतना ज्यादा। So we don't like to be humbled. तो हम विनम्र नहीं बनना चाहते हैं। So this is very deep-rooted attachment. तो ये बहुत गहरी pratishtha. ये बहुत गहरी आसक्तियां हैं ये Name, प्रतिष्ठा। fame, adoration, distinction. नाम, यश, प्रतिष्ठा, प्रशंसा। This is subtle sex life. ये है सूक्ष्म यौन जीवन। You think how difficult it is not be attracted or attached to material sex life. ये देखिए कितना मुश्किल है कि आकर्षण और आसक्ति हटाना स्थूल यौन संबंध से। What to speak of subtle sex life. तो सूक्ष्म यौन जीवन का क्या कहना? So this is very difficult to get rid तो ये of. बहुत ही कठिन है इससे मुक्ति पाना। It's the last thing to go. ये सबसे आखिरी चीज जो चाहिए। Material. भौतिक चीज। That's why it says even I remember my Guru Dad used to tell this about the tyagi, right? The person who doesn't have anything. तो मेरे गुरुदेव उदाहरण देते थे एक त्यागी का जिसके पास कुछ भी नहीं है। He's like materially, like practically, he has nothing. He's just wandering in the forest. तो भौतिक तरीके से उसके पास कुछ भी नहीं है, वो केवल वन जंगल में भटकता रहता है। But he's holding on to one thing. लेकिन एक चीज को उसने पकड़ कर रखा है। Because he's thinking, just see how detached I am. क्योंकि वो देखता है कि देखो कितना बड़ा त्यागी हूँ मैं। So he didn't give up the tyagi. क्योंकि उसने अपने त्याग का त्याग नहीं कर पाया। You see, so materially zero. तो भौतिक दृष्टिकोण से पूरा शून्य है। But proud of it. लेकिन उसका भी So he's उसका अहंकार attached to है। that. क्योंकि उससे वो आ सकते हैं। Look how pious I am. Look how detached I am. Look how advanced I am. कितना पुण्य हूँ मैं, कितना निरासक्त हूँ, कितना उन्नत हूँ। So this is very deep-rooted. तो ये बहुत ही And in गहरा है। prideful ego, it doesn't allow you to see it. और मिथ्या अहंकार दंभ में हमें अनुमति नहीं देता इसको देख पाने के लिए। That's why the surgery is it's like, pinching. I know my words are pinching you. इसलिए गुरुदेव कहते थे सर्जरी जो है मुझे पता है मेरे शब्द तुम्हें चुभ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं क्योंकि मिथ्या अहंकार Because of this attachment to body and prestige. क्योंकि ये शरीर और प्रतिष्ठा से आसक्तियां हैं। Even you see that people, they want money, but it's for the prestige. It's not necessarily just for the money. कई लोग जो है पैसे चाहते हैं, वो भी प्रतिष्ठा पाने के लिए, कोई जरूरी नहीं है केवल बस पैसे चाहिए। Even they're like disrespectful to the money. कई बार वो पैसे का उतना सम्मान नहीं करते हैं। Because it causes so many problems for them. क्योंकि पैसे से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। Right? But the prestige, लेकिन प्रतिष्ठा, that's the thing. ये वो सबसे So it's just like someone builds their dream home, right? They call it like a dream home. उदाहरण देते हैं जैसे कोई अपने सपने का घर बनाता है। And then the only satisfaction they get after all of that sacrifice and austerity is to bring friends there and show them, just see what I built. और उसकी एक ही मात्र संतुष्टि होती है अपने दोस्तों को बुलाना, उनको दिखाना, देखो मैंने कितना बड़ा घर बनाया। It's the only satisfaction he's getting. यही एकमात्र संतुष्टि उसको मिलती है। He's doing just for that. बस उसी के लिए वो कर रहा है। Just see what I have. देखो मेरे पास क्या Just see what I did. Just see what a great person I am. देखो मैं कितना महान व्यक्ति हूँ। Right? Prestige, false prestige. प्रतिष्ठा, मिथ्या प्रतिष्ठा के लिए। So that's why Krishna, Guru Krishna, they set us up and they put us in a situation where our false ego gets a cut, it gets pinched. तो इसलिए गुरु कृष्ण हमें ऐसी स्थिति में डालते हैं जहाँ हमारा मिथ्या अहंकार थोड़ा काटा जाता है या थोड़ा चुभता है हमें। Right? Like Rishi, right? जैसे ऋषि।
He's just trying to be helpful, while वो he's मदद just trying करने to का प्रयास open the कर रहे हैं, window. खिड़की खोलने का प्रयास कर रहे थे। And then Gurudev said, here's a wonderful opportunity. गुरु ने देखा ये अच्छा मौका है अभी, And then it's in the public, और सभी लोगों के बीच में कर रहे हैं, right? So it's like bitter medicine if it's in the public. और कड़वा लगता है जब पूरे सभी लोगों के सामने किया Then जाता he's standing up and everyone's staring at him. है। और वो खड़े हैं और सभी लोगों को देख रहे हैं, And he's like, he has to like walk back to his like sitting space, you know? और फिर वो वापस चल के आते हैं। And he's like, he needs like a massage, you know? ऐसा लगता है हमको मसाज की जरूरत पड़ेगी, A little pinching went on there, you know? हमको थोड़ा चुभ रहा था। Then he sat down and he's like, you'll be all right, you know? फिर वो बैठे, मैंने कहा तुम ठीक हो जाओगे। But if we don't grumble and complain about it, it will actually purify our false ego. लेकिन अगर हम शिकायत नहीं करेंगे, कोई नाटक नहीं करेंगे, तो ये असल में हमारे शुद्ध करेगा हमारे मिथ्या Because it will अहंकार से। humble us. क्योंकि ये हमें विनम्र बनाएगा। Right? But if we don't like it, लेकिन अगर हम ये and we're पसंद नहीं करेंगे, complaining about और it, हम उसके grumbling and complaining about शिकायत it, करेंगे, then you don't get the benefit. तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। So then it's painful, you're grumbling, complaining, and then you don't get the purification from the release from the false ego platform. तो आपको दर्दनाक, आपको दर्द होगा और आप शिकायत करेंगे और आप मिथ्या अहंकार से शुद्ध नहीं हो पाएंगे, मुक्त भी नहीं हो So पाएंगे। we get cheated out of the benefit. तो हमें लाभ पाने के बजाय हम ठगे At जाते हैं। least if you're going to get some purification, take it in a way where you get a benefit out of it, isn't it? तो अगर कम से कम शुद्धिकरण मिलेगा अगर हम उसे सही तरीके से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। And many times Gurudev said, don't grumble and complain. और कई बार मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि आप शिकायत मत कीजिए। It's Krishna's mercy, Guru's mercy, just be humble and just accept it and don't grumble and complain about it. And after that, you'll feel like some freedom, little bit of freedom from the false ego problem. ये गुरु और कृष्ण की कृपा है, थोड़ा विनम्र होकर शिकायत मत कीजिए, तो आप धीरे धीरे अपने मिथ्या अहंकार से देखेंगे आप स्वयं को शुद्ध कर पाएंगे। But it's easy to be a guru and then don't disturb anybody's false ego. लेकिन ऐसा गुरु बनना बहुत आसान है और किसी को मिथ्या अहंकार को अगर परेशान ना करना हो। Oh yes, I'm giving blessings and what are you doing for Krishna? Oh, very nice, right? It's easy to be this kind of guru. आशीर्वाद देना, हाँ जो कर रहा है आप कृष्ण के लिए करिए, ऐसा गुरु बनना बहुत आसान है। Right? Because you're not dealing with anybody's false ego. क्योंकि आप किसी के मिथ्या अहंकार को कुछ नुकसान नहीं You're पहुंचा रहे। not taking a risk. आप कोई You're खतरा not नहीं उठा looking रहे। for a way to humble them, to purify them. तरीका नहीं निकाल रहे कैसे इनके मिथ्या अहंकार काट के उनको विनम्र बना जाए, उनको शुद्ध किया Then जाए। you're just cheating them. तो आप केवल उनको ठग रहे हैं, Because you're keeping them in ignorance. क्योंकि वो उनको अज्ञान में रखे हुए हैं। And those who speak, who take the risk to approach our false ego और जो ये खतरा उठाते हैं हमारे मिथ्या अहंकार तक पहुंचने के and लिए, try to help us, हमारी मदद करने के लिए, to speak the truth, to help us, हमें सत्य बोलने के लिए, It's हमारी मदद करने के लिए, unpalatable. जो कड़वा होता है, sometimes it's very unpalatable. कभी कभी बहुत ही कड़वा होता But है। if we know this is important for me to accept it, लेकिन अगर हम ये समझ पाते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए स्वीकार it's करना, true what he's saying. जो उन्होंने कहा वो So सत्य I है, have to humble myself. तो मुझे विनम्र बनाने की जरूरत है Don't स्वयं को, complain about it. इसका शिकायत करने की And जरूरत just है let some time go by, और थोड़ा समय जब बीतने and then देते you'll हैं, see you got some benefit from that. तब आप देखेंगे आपको उससे कुछ लाभ मिलेगा। But that type of guru, not everybody wants that kind of guru. लेकिन सभी इस तरह के गुरु नहीं चाहते हैं And not everybody wants to be that kind of guru. और कोई इस तरह का गुरु बनना भी नहीं चाहता, Because it's such a headache. क्योंकि ये इतना सर दर्द है, People don't like it. लोग पसंद नहीं करते इसको, They're tired with you. लोग आपसे गुस्सा होते They're हैं, misunderstanding what are you doing, why you're doing. लोग गलत समझ बैठते हैं आप क्या कर रहे They हैं, take क्यों कर it रहे in the हैं, wrong way. गलत तरीके से ले Then लेते they're हैं चीजों को, criticizing you, दोष निकालते judgmental हैं, of you. न्याय करते हैं आपके ऊपर, Then they go against you. आपके विरोध में They जाते make हैं a lot of enemies. और बहुत Also. सारे शत्रु बना लेते हैं आप। It's truly a thankless task. ये असल में बिना धन्यवाद के किया गया कार्य है, But if you want to do it right, that's the reality of the service. लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो यही इस सेवा की सच्चाई है। Otherwise, you're cheating and they're cheating and no benefit comes out of it. Then what's the point? वरना आप ठग रहे हैं और वो भी ठग रहे हैं और दोनों की इस प्रक्रिया से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। So we have to try to humble ourselves out constantly हमें स्वयं को निरंतर विनम्र बनाने का प्रयास करना होगा, because we're prone to this false ego and false prestige.
We're addicted to it. बुरी लत लगी हुई है इस मिथ्या प्रतिष्ठा की। So being introspective means that you're constantly guarding against that mentality. तो अगर आप नित्य अपने भीतर छानबीन कर रहे हैं इसका मतलब अपने उस मानसिकता से आप स्वयं को रक्षा करने का प्रयास कर But रहे if we're not introspective and we're not honest, we'll not understand it. We'll not see it. We'll not recognize it. अगर हम स्वयं की छानबीन नहीं कर रहे हैं, अगर हम ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। And that's why Krishna has to make the guru to say something to you. और इसीलिए कृष्ण गुरु से कुछ ऐसी बातें हमसे कह बुलवाते हैं। Otherwise, we won't hear it. We won't realize it. वरना हम उसको सुन नहीं पाएंगे, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। But the more advanced we become, the more introspective we are, the more we can understand. Oh, Guru and Krishna, they don't like this thing. तो जितना ज़्यादा हम प्रगति करेंगे, उतना ज़्यादा हम समझ पाएंगे गुरु कृष्ण को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। This is unacceptable. और इसको स्वीकार नहीं किया You'll जाता। automatically know. आप अपने आप ही इसको समझ पाएंगे। So we have to either humble ourselves or we're going to get humbled. तो या तो हमें स्वयं को विनम्र बनाना होगा या हमें विनम्र बना दिया जाएगा। And then if that doesn't work, then just Maya is going to humble us. और अगर ये भी काम नहीं आएगा, तो फिर माया हमें विनम्र बनाएगी। Old age, disease, and death will humble us all. बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु हमें विनम्र बनाएगा। I think you were talking about that today, right? Like how the guru puts us like in a pressure cooker, something like that. मुझे पता चला आप ये बातें कर रहे थे कैसे गुरु जो एक प्रेशर कुकर बनाते हैं। And the instruction that the guru gives you is your private, customized pressure cooker. और जो निर्देश आपको गुरु देते हैं वो आपके लिए ही आपकी परिस्थिति के आधार पर बनाया गया प्रेशर कुकर है। So when I look, everyone will be in different size pressure cookers. मैं जब देखता हूँ सबके तरफ ऐसा लगता है सबको अलग-अलग साइज के प्रेशर कुकर, कोई लंबे हैं, कोई चौड़े हैं, Some are peaking, टेढ़े हैं, some are just simmering. कुछ लोग हैं बस वो। So according to what you need, then that will be all inclusive. तो जिसकी जैसी जरूरत है उसके आधार पे बनाया जाएगा कुकर। And just when we feel like, okay, now I have this figured out, और जब कोई सोचता है कि हाँ अब मैंने सब ठीक तरीके से पता लगा लिया है, then Krishna, he'll just turn up the heat. तो कृष्ण जो है थोड़ा और आग बढ़ा देते हैं। Right? Otherwise, you just get stuck in that place. You don't grow, you don't expand, you don't stretch yourself, then you're just stuck. Okay, I'm just comfortable at this temperature. I figured out how to be reasonably comfortable at this temperature. तो आप जो है अटक जाते हैं एक जगह पे, ढीले ढाले हो जाते हैं कि जो गर्मी आ चुकी है उस गर्मी में स्वयं को ठीक ठाक से स्थित कर लेते हैं। And then, Krishna goes by and just says, और कृष्णा बगल से गुजर रहे देखते हैं ये शांति से बैठा है he's तो और आग always बढ़ा keeping देते you like just short of like a total boil, हैं। तो बस उतना ही रखते हैं कि पूरी तरह से उबल के पकना जाए। He doesn't want it to blow up either, right? क्योंकि वो उड़ाना भी नहीं चाहते हैं उसको। So it's just like just short of blowing up, थोड़ा सा बस कम रखते हैं कि वो फट ना जाए। When you hear yourself saying, I can't tolerate one more thing, then you know you're well situated. जब आप स्वयं को बोलते हुए सुनेंगे कि मैं और एक क्षण अब सहन नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब आप अच्छी स्थिति में पहुंच गए। If one more thing comes, I'm gonna die. और एक कुछ चीज हो गया मेरे साथ तो मैं मर जाने वाला हूँ। Then you know you're getting mercy. तब आपको समझ आएगा आपको कृपा करनी। Now it's maxed out. अब सबसे ज्यादा मिल रहा है। And then just as it's ready to blow, then Guru and Krishna come and they just okay, maybe I'll put that down. जब थोड़ा सा फटने वाला होगा तो गुरु कृष्ण जो है आग थोड़ी कम कर देंगे। चलो। Because we don't want to kill the patient, right? कि मरीज को मारना कार्यक्रम नहीं है। Right? You don't want to burn the rice, right? At the end of the day. कि चावल को अंत में जलाना नहीं You है। want to cook as fast as possible जितना without तेज burning it, right? बना सके और बिना जलाए रहे चावल को। So if we embrace that concept and participate in that purification process, तो अगर हम इस प्रक्रिया को गले लगाएं और इस प्रक्रिया में हम भाग लें शुद्धिकरण की प्रक्रिया में, and we understand the more you can tolerate that and not go mad and not misunderstand it, और अगर हम समझ पाएं कि जितना ज़्यादा हम इसको सहन कर पाएं और गलत ना समझें, पागल ना हो, quicker all of the filth will get burnt off. तो उतना जल्दी सारा कचरा जलकर साफ हो जाएगा And all the sinful reactions will get burnt off. और सारे पाप करने के फल जलकर खत्म हो जाएंगे। So if we just like, okay, just put it on simmer, then it's going to be on a simmer. Okay, you're in the process.
But how many lives is this going to just be on a light simmer? अगर आप बस हल्की सी आग में केवल पकाना चाहते हैं तो ठीक है, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन कितने जीवन तक आपको उस प्रक्रिया में लगे रहना पड़ेगा. So if we're really smart, really serious, we'd be like, crank it up as far as I can possibly tolerate it and understand it. असल में अगर गंभीर हैं, असल में हम इस प्रक्रिया का पालन करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे आग जितना ज़्यादा किया जा सके, जितना हम सहन कर पाएं. Right? Because if you don't understand it and you're not able to tolerate it, then it becomes counterproductive. क्योंकि अगर आप उसको समझ नहीं पाएंगे, अगर आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, तो आपको उल्टा फल मिलेगा. If you understand what benefit you're getting, what benefit you're going to get, तो अगर आप समझ पाते हैं आपको क्या लाभ मिलेगा, आपको क्या मिल रहा है, and we pray for intelligence and power of tolerance to go through the process of purification, that means you're just speeding up your spiritual advancement. तो अगर आप बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे और कैसे आप सहन शक्ति पा सकते हैं, तो आप अपनी शुद्धिकरण की प्रक्रिया में और तेजी से आगे जा सकते हैं. That's real intelligence. ये असल बुद्धिमानी है. Otherwise, Maya is like, this is going too fast. और हमारे कहेंगे कुछ ज़्यादा ही तेजी This से आगे is बढ़ रहा है. insane. ये सब पागल है. This is too ये much. कुछ ज़्यादा हो रहा है. I thought this was a gradual मुझे लगा था कि process. धीरे-धीरे वाली प्रक्रिया है. This is too heavy. ये कुछ ज़्यादा ही भारी है. Then you get cheated. तब आप ठगे जाएंगे. Then we go back to just one easygoing life. तब हम आसानी से चलने वाले जीवन में जाएंगे. Not too much, not too little. ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम. We're looking for the golden middle. हम जो है बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करें. Then we get cheated. तब हम ठगे जाएंगे. So when we're going through the process of purification, we should understand what are we trying to do, and are we embracing and participating with the process in a serious way? जब हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जाने गुजर रहे हैं, तो हमें देखना होगा हम क्या पाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या हम इस प्रक्रिया को गले लगा रहे हैं और हम क्या करने के लिए तैयार हैं इस प्रक्रिया में. And then you get mercy of Guru Krishna that much quicker. और उतनी जल्दी आपको गुरु कृष्ण की कृपा मिलेगी. It's like if you have, I don't know, say you have 80% Himalayan mountains, right? जैसे मान लीजिए आपके पास 80% हिमालय पर्वत. So that 80% has to get burnt off. तो वो 80% जलाकर राख करने की जरूरत है. Now, do you want to burn that off, in a few months or a year? आप उसको जलाना चाहते हैं कुछ महीनों में, कुछ सालों में, Or do you want to burn that off, like say, in a 20-year period? या फिर आप उसको 20 सालों के अंदर जलाना चाहते हैं, Or maybe next life? I'll या burn it अगले off. जन्म. But at some point, it's going to have to get burned off. लेकिन किसी एक समय इसको जलाना At होगा. some point, we're going to have to go through the purification. किसी एक समय उस शुद्धिकरण से हमें गुजरना होगा. So if we understand that, if we're smart, that's why it says better do it while you're younger. और अगर हम बुद्धिमान हैं, इसको समझ पाते हैं, और कहा जाता है इसलिए बेहतर होगा आप उसको जब Because युवा then हैं, तब तक you'll have the strength of mind and senses to be able to tolerate it. क्योंकि आपके मन और इंद्रिय में इतनी शक्ति होगी आप उसको सहन कर पाएंगे. And then you can much more quickly burn off all of the sinful reactions. तो आप बहुत तेजी से अपने पाप करने के फलों को जला पाएंगे. That means you're participating voluntarily with the tapo divyam. इसका मतलब आप स्वेच्छा से इस तपो दिव्य में भाग लेने का प्रयास And करें. it says that tapo divyam is difficult, और कहते हैं ये तपो दिव्य बहुत but after कठिन. you go through that, then it's unlimited nectar, mercy. जब इससे आप गुजर जाएंगे तो अनंत रूप से आपको कृपा मिलेगी, अमृत मिलेगा. And was it mode of passion, rajagun, right? There's pleasure in the beginning, limited pleasure in the beginning, sense gratification, but then unlimited suffering. तो रजोगुण Heavy में price for it. शुरुआत में आपको कुछ थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद असीमित रूप से दुख मिलेगा, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. Pleasure is there, थोड़ा सुख है, heavy price. लेकिन मूल्य बहुत अधिक है. And then tamagun means suffering, beginning, middle, and end. और It's all तमोगुण का मतलब suffering. है दुख शुरू, मध्य और अंत, हमेशा दुख मिलेगा. Even they have sayings like, suffering is the new happiness. यहाँ तक कि कहावत भी है कि दुख ही हमारा भी नया सुख है. Right? You can't get away from the suffering, so you just to make it like a psychological, suffering is actually my happiness. तो दुख से जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कहते हैं दुख में ही सुख है, दुख ही मेरा असल सुख है. Orange is the new black, right? ये नारंगी जो है अभी मेरा नया काला रंग है. Then you have to make some kind of psychological, adjustment, तो which इस तरह doesn't का- really work. इस तरह का मन को व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन असल में काम नहीं करता. Suffering is the new happiness. कि दुख ही मेरा नया सुख है. Beginning, middle, and end, right? So just going to somehow convince you that's your suffering is your happiness. तो शुरू, बीच में और अंत में दुख मिल रहा है, तो खुद को आश्वस्त करने का प्रयास करेंगे कि दुख ही में असल में सुख है. So
Even animals aren't that stupid. You know? यहाँ तक कि जानवर भी इतना बेवकूफ नहीं Only crazy people will say like that. सिर्फ कोई पागल आदमी ऐसा करेगा Right? All of this suffering is actually my happiness. कैसे दुख जो है असल मेरा सुख हो सकता है And then Prabhupada said, why are you calling the fire department when your house is on fire then? और भगवान कहते हैं आपके घर में अगर आग लगी हो तो आप आग से बचाने वाले लोगों को क्यों बुलाते हैं Why don't you just sit there and bake in the fire, you know? क्यों आप आग में बैठ के पकते नहीं Since that's your happiness, क्योंकि वही अगर आपका सुख why है are you calling the fire department to save you? तो क्यों आप आग से बचाने वाले लोगों को बुलाते हैं You आपको want बचाने them के to लिए save you from your happiness? आप अपने सुख से चाहते हैं वो आपको बचाएं So, all right, are we good? क्या हम ठीक है I think that's enough. मुझे लगता है ये पर्याप्त है So thank you everyone very much. धन्यवाद सभी Appreciate का it. बहुत बहुत मैं सराहना करता हूँ Congratulations to everybody today. और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ Welcome to the new basket, the world of the new basket. स्वागत है आपके सर पे जो नई टोकरी आई है Shishi Gauri Thai ki, Jagannath Baladev, Lady Subhadra Devis ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudev ki, Srila Gurudev ki, Samaveda Bhakta Binda ki, Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Hare Krishna.